Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during PIMEC, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of PIMEC, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super.
Pakistan Navy under बहुत अच्छा है। शाम के वक्त हम देखते हैं कि हवा बढ़ जाती है और हवा जो है वो ठंडी भी हो जाती है, और ये वो स्टेडियम जहाँ पर ये इवेंट खेला जा रहा है KTPL सीज़न 2, और KTPL सीज़न 2 के इस मुकाबले के टॉस पे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं के आसिफ के पास जाकर। ओवर टू यू के आसिफ। Good afternoon, ladies and gentlemen. Another fantastic and exciting day for tape ball cricket. And Badar Expo presents Karachi Tape Ball Premier League. We're ready for the toss of the first match of this afternoon. I'm down here with two captains, Johar Jawans, Syed Nasir, and the captain of North Nawab, King of Asia, Khurram Chakwal. And we do have match referee, former international cricketer Naeem Ahmed. Syed Nasir, the captain of Johar Jawans, will flick the coin. Head is the call. It's head. Head. और खुरम चकवाल टॉस जीत गए। खुरम क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले बॉलिंग करेंगे। अब खुरम पहले मैच में आप नहीं थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई टीम मीटिंग हुई है, कुछ स्ट्रेटजी बनी है? जी जी बिल्कुल, टीम मीटिंग हुई है, स्ट्रेटजी बनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा डिलीवर करें, अच्छा परफॉर्म करें और मैचेस को जीतें। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में आप पहले एडिशन में नहीं थे, इस दफ़ा आए हैं, कैसी एक्साइटमेंट है, इस टूर्नामेंट को कैसे देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है तमाम मैनेजमेंट की, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी जितना हिस्सा हम भी डाल सकें इसमें डालें और अच्छा परफॉर्म करें और इस टूर्नामेंट को जीतें। 6 ओवर्स में कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे जौहर जवान्स को? कोशिश करेंगे, आपको कंडीशन का पता ही है, या कराची में हवा चलती है, बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो 70 से 80 तक कोशिश करेंगे आउट करें और लीड सेट करें। ओके, गुड लक। थैंक यू। नासिर, एक दफ़ा फिर अब आप पहले बैटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? बिल्कुल, पहले बैटिंग करते हैं, वही स्ट्रेटजी है पहले वाली, 100+ करेंगे इंशाल्लाह, और ये है कि फिर दूसरी इनिंग में भी उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और पहले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम की गलतियां हुई कुछ, उन गलतियों के ऊपर बातचीत हुई, आपके मेंटोर हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर नवीद लतीफ़, उनसे बातचीत हुई? पहला मैच अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा ही खेला था, बस थोड़ी सी मिस्टेकें हो गई, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे अभी। और क्या प्लान है कि जो बैटर्स पहले परफॉर्म नहीं कर पाते, 2 इनिंग्स होती हैं, तो पहली इनिंग्स के बाद भी टीम मीटिंग होती है? बिल्कुल बिल्कुल, पहली इनिंग के बाद मीटिंग होती है और सारी चीज़ों को देखते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। आज कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए? इंशाल्लाह आज जीतेंगे। चलिए, गुड लक। थैंक यू। Well, news from the center is that the captain of North Nawab, Khurram Chakwal, he has won the toss and he has decided to bowl first. It's over to you, Combox. Thank you very much, K. Asif and both the captains. So North Nawab have won the toss and they are going to field. And it's going to be Johar Jawan who will start their batting in their first innings. We are taking a short break, and then when we will back, you will see the live action. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super.
Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The three-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. North Nawabs have won the toss and elected to field first, as this is the sequence of the tournament. Every captain who won the toss, who put his opposition in and also won matches. Umpires are making their way out in the center, and North Nawabs already have taken the field. And these are the teams you can see on your screen. Johar Jawans, captained by Syed, Nasir, Mimran, Shehzad, Falak, Affan, Salam, Jahangir, Dania, Lefty, Junaid, Chef and Bukharin. And on the other side, Khurram Chakwal is captaining the North Nawabs. Fahad Chunnu is also there, another popular name. Then they have Farhad, Hafiz, Pola, Shafiullah, Agha, Khurram, Rabada, Zabiullah, Asif, Pathan, Moiz, Yahya and Bilal, Shah. Both teams have lost their first game, but today one of them will win, and I've got Farhad alongside. Farhad, assalamu alaikum and good afternoon. Wa alaikum salam. Good afternoon, Mr. Rana Shwak and everyone, wherever you are. As another exciting day is expected. So we have a slightly longer day today, as today's Sunday in this competition, the first Sunday of this competition, season 2. And we have just seen the toss, so quite wisely. The team batted first. Team won the toss and decided to bowl first. Yes, so we have a different format, as we saw in the previous previous edition as well. And the fielders are taking their position, and the batsmen are making their appearance. Johar Jawan would look to have a big score on the board because team bat first haven't really succeeded so far in this tournament. Every match is won by the chasing side so far. And remember, this is the 4th game of this KTPL season 2. 8 teams are taking part. Very hot out there in the center, as Asif told us, because he made his way back into the com box right from the toss. And now he's eating rice with passion. Dania lefty
is one of the openers. And Syed Nasir, the captain himself, is standing on the non-striking end. And bowler will start the proceedings from the end where we are commentating from. You may call it a commentary box end or media center end. Farhad Abdali is the bowler who's going to start the proceedings. And Dania lefty will have the first strike. Yeah, Farhad Abdali, saw him before, the fine prospect here, and today, as you mentioned, it's a very hot day. So the entire week is extremely hot. Everyone is experiencing in Karachi, but I personally believe that as far as the runs is concerned, the batsmen will go after the bowlers, and this hot conditions won't keep them away from scoring the runs. And they should, because scoring quick runs is the name of the game, because they've got only 6 overs to play with. Danish is one of the umpires who's officiating at the bowling end at the moment, and then we have the other umpire who's standing at point, because left-handed is taking strike, and probably he's trying to avoid the sun. That's why it's not at the square leg. He's standing at the point. So first ball coming up. We are not too far away from the action. Umpire said, let's play, gentlemen. Here we go. First ball of the 4th match of KTPL Season 2 coming up. And straight away, it's whacked over mid-wicket for a massive 6. Daniel lefty hit that one right out of the screws. What a start, what a perfect start of the day. Daniel lefty, the left-handed batsman, took the responsibility to face a new ball. And Farhad Abdali wasn't on target. And what a way to welcome the bowler. Johar Jawans got off to a perfect start. And bowler backed himself with a very good ball. Good comeback. He almost jogged him. Leg byes is taken. And once again, as we saw in the previous game, the batsmen tend to check the balls every time when he gets missed or when he mistimes a shot. So it's a kind of a habit of a batsman in this format. Indeed, in trade ball, we usually see batsmen do this and that all the time. But now they are, I think, playing on a bigger platform where they have to be disciplined. And that's a good shot. Over covers. It bounced once before it get to the boundary. 4 more. It was in the slot, and the bowling side didn't have any protection out there at cover. Normally we see a lot of 6s, not much 4s. It was outside the off stump there, and very well played by Nasir. He faced his first delivery and is off the mark in style. Both batsmen started their innings with very positive frame of mind, and they mean business at the moment. They know what they have to do. Way outside the off stump, it bounced. It took off, wide called, couple of runs. And one of the over called by the umpire was wide given, and also one of the over. A little bit extra pressure felt by the bowler Abdali, and he just made extra effort. That's why he lost his line. It was above the head as well. So pressure straight away on the bowler. Correct. Farooq, 13 runs already been scored in 3 balls. That was a good ball. Once again, I think it took the bottom part of his bat. Wicketkeeper couldn't quite stop it. Third man had to do the job. Yeah, some relief for the bowler, left armer Abdali was outside the off stump, and there was a fielder and the wide deep slip, you may say, and a rare dot ball. But still a good over, 13 for 9, and we have 2 legitimate balls left in this over. Very rightly put. 2 legal deliveries, because they can be extended if bowler bowls a wide ball or bowls a no ball. And no balls and wide balls are very, very costly, particularly in this tournament. This one is driven away mid-office. There could have been close, but I think batsman well home. This took a very good single. Nasir found himself in trouble there. He was a little bit shaky, and he could have been run out at the bowling side. The man was mid-off
did right, it made a good effort, but at the end, Nasir survived. Because batting side is getting 2 runs for the wide and also getting 2 runs for the no ball. So it is very, very expensive ball to be bowled wide and no. Last ball of this over coming up, if he doesn't bowl wide or a no. And that's a magnificent shot outside the off stump, which was there, and he put that away right under our commentary box for 4. Good way to end the over. 1 over is bowled, 18 for none. What a good strike by Daniel lefty outside the off stump. There was an offer to make most of it and smashed it hard. He cleared the infield, and also after the first bounce, the ball went over the boundary. So excellent start here, and quite rightly, the ball is straight away under pressure there. So Abdali, he has to come back strongly in this new over. Today is a triple header. We have 3 matches to be played today, and this is the first one. And also, final of the Asia Cup will be played today between Pakistan and Sri Lanka. India has been kicked out of the Asia Cup. So was the Bangladesh. Naseem Shah producing beauties over there. Couple of sixes and couple of balls in the last over. So a lot of action is around. A lot of cricket is happening throughout the world. And KTPL Season 2 is on its full swing. Second over about to be started from the far end. Khurram Rabada. He names after Kangiso Rabada from South Africa. Was a very good fast bowler. He streams in. And this is going to be out. Yes, it's caught just behind the wicket, wide of the wicket keeper. You may call it a deep slip or a fly slip, and the first wicket is gone down. What a start by Rabada here. He went for the big shot straight away there, but at the leading outside edge, in the end, the short third man collected a good catch. As Nasir is the man who is disappointed with himself. Abdali conceded a maximum in his first ball, previous over, and here is Rabada. Nasir goes for 5, and the first wicket goes down for 18. What a terrific start for Rabada. He picked up a wicket, very first ball which he has bowled, and Lahore is where he comes from. So a lot of cricketer from Punjab is the part of this league. Falak has arrived at the wicket. He could be dangerous as well. I saw last night he was stonking the bowlers about. Yes, he's a very popular cricketer in tape ball cricket. I saw him in previous events as well. He has been dangerous on any given day. He can take on any bowler. And he has an advantage because field restrictions as far as concerned, only 2 men are outside at the boundary, and the rest of the fielders are inside the circle. So he will try his best to make most of this opportunity. Very well bowled again. Batsman did throw his bat at that one, but didn't make any contact, and he got that one on his body. Good start for Rabada. Absolutely, as an excellent start by Rabada. Falak is just played a dot ball here, and look at how deep he stands. His stance is not as different, because in table cricket we see the batsman stays very deep in the crease. Yes, they do camp on the back foot most of the time in tape ball cricket. Another good delivery. I think it took a little bit pace off the ball. Batsman was trying to hit that one onto the onside. He's targeting the square leg boundary, but again didn't make any contact. Good bowling from Rabada. He has picked up a wicket and hasn't given away any run in 3 balls that he has bowled so far. Outstanding start, there is no doubt about that. A wicket followed by a couple of dot balls. Down the leg side she goes, and a wide ball is called by the umpire. So couple of very, very valuable runs. Absolutely, yes. Wide down the leg side, and once again Falak tried to heave to the onside, and it was wavered, the wide given by the umpire. So the first run in this over, and some relief for the batting side.
Rabada operating from the Dr. Syed Imran Ali Shah pavilion end. Very well bowled again. This is terrific piece of bowling, Farooq. Top class stuff by Rabada. It was right on the money, and Falak really struggled to get going to make any contact. And what an over it has turned out to be. Apart from wide, Rabada has been spot on with his line and length. And he's showing why he's called Rabada. Bowling with some authority, bowling with some venom. Very well bowled again, and he's caught him. He has bowled him. That's a tremendous bowling. Hasn't conceded a single run with the bat, and he picked up a couple of wickets. What a turnaround of the start. The first over was brilliant for Johar, Jawans, and Falak is always a big wicket for opposition. Tried to heave to the onside, but he just had no clue whatsoever in the end. A joy for Rabada and joy for North Nawab. Falak never looked comfortable. Got out for naught after having faced 4 deliveries. 20 for 2. Absolutely hot out there, but the wind is picking up a little bit. And these trees beautify the atmosphere, beautify this ground. Mimran has arrived at the pitch, wearing his inners in. First over went in the favour of the batting side. In the second over, absolutely on the contrary. And it has gone in the favour of the bowling side. Although Rabada got 1 delivery left, but he has bowled magnificently well. Has taken a couple of wickets and conceded just a couple, and that was of wides. Umpire came from square leg, adjusted the bails in grooves. Falak was the last man to be dismissed and got out for naught, and he faced 4 deliveries. New man Mimran is ready to have his first ball. And he straight away has given it a go. And this has travelled many a miles. What a good start for Mimran. 26 for 2. 2 overs been completed. Finally, umpire raises both arms, and what a shot that is from Imran, and that has spoiled the over. Khurram Rabada was spot on, but he conceded a maximum the last ball of the second over, and somehow the consolation for Imran and his side is a much needed maximum for him. But nevertheless, well bowled Khurram Rabada. And Mimran straight away announced himself that he's here to do some business. He's not going to sort of bog down or not going to sort of hang around. He's going to play his strokes. Doesn't matter, couple of wickets down. Doesn't matter, Rabada has bowled well, but he smashed him for a big 6 straight away. And this is what you got to do, because you have 10 wickets and you got to play only 36 deliveries. Of course, you can't consume many deliveries. You have to take chances. You have plenty of wickets in hand. So just legal 36 balls you have to take chance to release the pressure. Honor of Johar Jawans was on your screen, and they were looking a bit gloomy. Another good ball. Batsman will take a single though. 17 conceded by Abdali in his first over, so he wants to finish on a strong note. So it's with the left arm quickie, and he has to be pinpoint accurate as far as the landing of ball is concerned. The ground is not so large. The batsmen have an authority to free their arms, and the field restrictions have been lifted. You can see that we have a long off, long on, and we have deep mid wicket. And there is some adjustment. Once again, Khurram Abdali. And this is a tremendous shot. Pulled it over mid-wicket and pulled it with the power. Mimran showing his guts.
That was a gallant shot by him. That is superb. Just for a second, square leg fielder had a chance. He thought he had a chance, but the batsman cleared it quite comfortably. It's Mimran. What a start from him. 12 of just 2 deliveries. He's throwing his bat at everything. This one is driven away. There is a man back at wide long off who had to do a bit of running to pick up the ball, and Mimran has taken a single. So runs are coming thick and fast off the bat of Mimran. And both batsmen had a bit of chat, discussed something. Now both are going back to their respective creases. And it's going to be Dania lefty to take strike, who started off his innings with a massive 6. It is going down towards the onside for an easy single. Tacked on onside field for Tania lefty, the deep square leg, deep mid wicket, deep long on, and once again some adjustment of the field. So we have right hand and left hand combination. There is some exercise for the fielders, some thought process for the skipper as well. The one's Imran. What a start from him! 13 of 3 from Imran. This is the field which we have for the right-handed. Long on is guarding on the boundary. Mid-wicket is patrolled by someone, and square leg is also back on the onside. Mimran threw kitchen sinks at that one, but didn't make contact, and umpire extended his arms, which means that was a wide. And whenever I say wide, it means 2 runs. And that is where Farhad Abdali is not convinced. He wasn't happy from the umpire's decision. He thought it was pretty much inside the guideline, but nevertheless, a couple of runs conceded. Imran 13 of 3, Daniel 12 of 5. So it's a good start, although they have lost a couple of wickets. They lost a wicket of Falak. It's all with a huge wicket, but they have a license to throw their bat and get a number of runs. Bowler just tied his socks, shoelaces rather, not socks. Socks. Mimran is getting ready again. 37 for 2. We are in the 3rd over. This one is hammered away. No one can stop this one. And it went like a treasure bullet. What a good shot. Phenomenal. It's like a shot from the gun. The fielder wasn't far away, but he struck it along the carpet, hit it flat, and ball got to the boundary in a flash. What a blow that is from Imran. He is certainly the man in dangerous form at the moment. Mimran is the one who's having a salt at the bowling at the moment. Playing some beautiful strokes. They wanted a single, which actually wasn't there. So good call by the non-striker. That run is not there. 3 overs bowled, 41 for 2. And Mimran missed the shot. He tried to work towards the onside, and right after miss hit, he checked the ball. And but nevertheless, a good start from Johar Jawans, 42 for 2 after 3 overs. शुक्रिया राना अशफाक। 3 ओवर का खेल ख़त्म हो चुका है और मिमरान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। 18 रन्स पर दानियाल लेफ्टी ने 12 रन्स बनाए हैं और फरहाद अब्दाली एक्सपेंसिव रहे। 2 ओवर में 33 रन्स दिए और कोई विकेट भी हासिल नहीं कर सके। फरूख, कराची टेबल प्रीमियर लीग आज तीसरा दिन और चौथा मैच। अब तक ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है। जी हाँ, शानदार क्रिकेट हमें देखने को मिली। 2 विकेटें ज़रूर गिरी है, लेकिन बड़े शॉट्स जिसकी तवक्को की जा रही थी पहले भी। और अभी 3 ओवर्स बाकी हैं, तो यकीनन ताबड़तोड़ हमला होगा जौहर जवांस की तरफ से। तानिया लेफ्टी सामने करने के लिए तैयार। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद और
बॉल स्विंग होते बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। काफी देर तक फील्डर जो बॉल पर निगाह रखते रहे, लेकिन आउटसाइड एज हुआ था जिसके नतीजे में बॉल स्पिन हुई और काबू में नहीं आ सकी फील्डर के, और देखते देखते बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चौके के साथ आगाज हुआ है इस नए ओवर का। 45 पर 2 स्कोर हो चुका है और तानियल पहुंच गया 16 के स्कोर पर। सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया है। उनका साथ दे रहे हैं मिमरान 17, 5 गेंदों पर उन्होंने बनाए। ये है खुर्रम रबाडा जो बहुत ही कामयाब रहे अपने पहले ओवर में। उन्होंने फलक को भी चलता किया, बहुत इकोनॉमिकल भी थे। 14.52 का ये रन रेट है हमारे सामने। तानियल लेफ्टी का आखिर तक रहना बड़ा ज़रूरी है और ख़तरनाक बैट्समैन है। बहुत गर्मी भी है यहाँ पर, लेकिन बैट्समैन को इस फॉर्मेट में हम खामोश रखें, कोई भी मौसम ये मुमकिन नहीं है। और ग्राउंड के चारों तरफ जो है ये शॉट्स खेलने की अहलियत रखते हैं दोनों बैटर्स। एक दफ़ा फिर खुर्रम रबाडा, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, हो किया इसको और कनेक्शन नहीं बना पाए। बड़े आराम से फील्डर वहाँ पे आएंगे और अक्सर ऐसा होता है कि शॉर्ट पिच गेंद को बैट्समैन पहुंचा देते हैं बाउंड्री के बाहर, लेकिन थोड़ा लेट हुए इस दफ़ा। तो खुर्रम रबाडा ने शानदार ओवर किया था इससे पहले और यकीनन पूरी अहलियत रखते हैं कि वो एक कमबैक करें चौका कंसीड करने के बाद। फर्रुख खुर्रम रबादा का ताल्लुक लाहौर से है और ये पूरे पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट लीग्स खेलते हैं, काफ़ी नाम बनाया है। और अगर आप इनकी लाइन और लेंथ की बात करें, आज भी बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्विक यॉर्कर्स भी करते हैं, बाउंसेस भी करते हैं। और टेप बॉल की जो खसूसियत है कि फौरी तौर पर आपका नाम जोड़ दिया जाता है किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, या फिर आपको ऐसे निक नेम दे दिया जाता है कि आप फिर उसी नाम से जाने पहचाने जाते हैं। जी, एक्सप्रेस बॉलर है जैसे ककीसो रबाडा, साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार क्रिकेटर। इनका पेस ही बहुत इम्प्रेसिव है। मिमरान अब सामना करेंगे और पुल करने में कामयाब, और कोई भी फील्डर अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि बॉल मीलों दूर जाके गिरी है गेंद। बड़े अच्छे अंदाज से कंफर्टेबली इसको पहुंचा दिया मिमरान ने। रबाडा ने सजा भुगती, बॉल को पीछे रखा और बड़े ही उम्दगी के साथ मिमरान ने छक्का हासिल किया पुल शॉट की सूरत में। मिमरान खान जिनका ताल्लुक अटक से है, ये देखिए बिल्कुल लाइन में आए और ऐसा पुल किया कि गेंद को राह दिखा दी स्टेडियम से बाहर की। शानदार छक्का डाउन द लेग साइड और विकेट कीपर अपील ज़रूर कर रहे थे। खुर्रम रबादा बातचीत कर रहे हैं अंपायर से, बट मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे शायद उनके ब्रश किया उनके ट्राउज़र से, तो शायद कंप्लेन है, लेकिन खुश नहीं है। और जब 2 रन जो हैं वो मिलेंगे वाइड की सूरत में, तो यकीनन बॉलर कहीं ना कहीं से कोई वजह ढूंढेंगे कि इनको इस वाइड को टर्न डाउन किया जाए। लेकिन बहरहाल रूल्स आर रूल्स और 54 पर 2 स्कोर। फर्रुख इतने बड़े लेवल पर और ये नेशनल लेवल पर ये लीग हो रही है और इसके चर्चे इंटरनेशनल लेवल पर हैं। अमेरिका में मैक टीवी पर इसको दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी गेंद, ये वो डिलीवरी है जिसके लिए खुर्रम रबादा के नाम से जाने जाते हैं। सो मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह से इन यंगस्टर्स को एक एक्सपोजर मिलेगा और ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखना है। अंपायर का डिसीजन मोस्टली टेप बॉल क्रिकेट में इस पर काफ़ी झगड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ से ये सीखने को मिलेगा कि आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा, आप कूल एंड काम कैसे रहेंगे। जी हाँ, मार्जिन ऑफ एरर तो बहुत मिनिमम है, लेकिन जितनी लाइन और लेंथ आपकी डिसिप्लिन होगी उतना कम मौका मिलेगा कि डिसीजन जो है आपके अगेंस्ट हो। एक दफ़ा फिर तैयार रबाडा, स्लोअर वन थी ये और उसको खेलने में कामयाब हुए और 4 रन का इशारा यहाँ पर वेट किया बॉल का मिमरान ने। पीछे गिरा हुआ गेंद, जल्दी नहीं की और फुल मार्क्स टू द बैट्समैन। स्लो बाउंसर था लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं थी और लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब थी और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। फील्डर मौजूद थे डीप फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर इनफैक्ट, बट काफ़ी तेज़ शॉट, 4 रन हासिल किए। और कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया, बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। छक्का एक दफ़ा फिर, अंपायर के दोनों हाथ फिजा में बुलंद, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, उम्दा स्ट्रोक प्ले मिमरान की तरफ से। तो चौके के बाद छक्का मिमरान के नाम। 4 ओवर्स के बाद 64 पर 2।
64 पर 2 जौहर जवान्स और नॉर्थ नवाब्स ने टॉस जीत के दावत दी जौहर जवान्स को पहले बैटिंग करने की और उम्दा बैटिंग। 2 ओवर अब बाकी हैं, देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग फिनिश करते हैं। ये पहली इनिंग होगी इस मैच की और करंट रन रेट की बात करें एक्जैक्टली 16.00। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, मिमरान राइट हैंडर बैट्समैन और उनके साथ है दानियल लेफ्टी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। 17 ऑफ 7 डिलीवरीज। टॉन्डा लेग साइड गेंद थी, गैप ढूंढने में कामयाब होंगे कि नहीं और 2 फील्डर्स आ रहे हैं और दोनों फील्डर्स एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के ऊपर छोड़ दे के वो बॉल को रोकेंगे और नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं एक फील्डर, जैसे हमें स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, लेकिन बॉल को रोकनी चाहिए थी आसिफ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसका खसारा भुगतना पड़ सकता है। दोनों ही फील्डर्स एक दूसरे की राह देखते रहे। ये देखिए इसको खेला था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के गैप के दरमियान और दोनों ही फील्डर्स वेट कर रहे थे कि कौन बॉल को रोकेगा और इसी असना में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। सो आई थिंक ये एक पुअर एफर्ट है और इस गलती से सीखना होगा। बहुत ही परफेक्शन के साथ एग्जैक्टली दोनों फील्डर के बीच में से बॉल गई है और दोनों जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि शायद उसकी तरफ बॉल ज़्यादा थी, मेरी तरफ थी। बहरहाल चौका मिला यहाँ पर बैट्समैन को और खेल दिया दफ़ा टीम स्क्वायर लेग की फील्डर सीधा हाथों में। और हम पाकिस्तान टीम में भी देखा कि जब कैच आ रहा होता है दोनों फील्डर दौड़ते हैं कि मैं कैच मेरा हो, लेकिन लकीली पाकिस्तान के फील्डर ने कैचिंग अच्छी की है। क्योंकि कॉलिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो कि ऐसा ना हो कि दोनों फील्डर टकरा जाएं और ऐसी कॉलिंग भी ना हो कि दोनों फील्डर ही मूव ना करें। फील्डिंग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि फ़खर जमान और खुशदिल शाह के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कॉलिंग नहीं थी, दो कि वो कैच पकड़ा गया। बट अगर रोहित शर्मा का वो कैच ड्रॉप हो जाता तो नुकसान हो सकता था पाकिस्तान को। सो ये कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मिमरान इसको ऊंचा खेले हैं, फील्डर बॉल के नीचे हैं और काफ़ी देर तक फजा में रही और यहाँ पर एक दफ़ा फिर कोलैप्स हो गया। ये वो बात थी जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मोइज और खुरम रबादा में कोलैप्स हुआ। कैप्टन बिल्कुल खुश नहीं है। मुश्किल कैच ज़रूर था, बहुत देर तक बॉल हवा में रही और जो लॉन्ग ऑन से फील्डर आए मोइज ब्रावो, उन्होंने जो है टाइम दिया, लेकिन इन दी एंड वो इतने करीब आ गए कि रिबाउंड में कैच लेने का चांस था, ये आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से वो टकरा गए। ये देखिए उनके पास तो शायद रिबाउंड में वो कैच ले लेते अगर मोइज ब्रावो उनके इतने करीब नहीं आते। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और यहाँ पर 3 रन मिल जाएंगे, 2 रन वाइड के। और अब फर्क एक्चुअली वही बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपने एक दूसरे को कॉल नहीं की, येस नो येस आई एम टेकिंग दिस कैच। ये बहुत ज़रूरी होता है और जब ये स्कायर कैचेस होते हैं, ऊंचे कैचेस होते हैं, उसमें अगर आपकी दूसरे फील्डर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कॉल नहीं है तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं कि क्लैप्स होता है और कैच ड्रॉप हो जाता है। बड़ा शॉट किया और गई बॉल बाउंड्री के बाहर, उम्दा स्ट्रोक। दानियल लेफ्टी बिजी हैं अभी तक अपने स्कोर को आगे बढ़ाने में और 22 पे पहुंच गए इस छक्के के साथ। उम्दा शॉट ऑन साइड पर और बॉल उनके बिल्कुल स्लॉट में थी। वेल प्लेड। लेफ्ट आर्म बॉलर और ये उन्होंने राउंड द विकेट आ रहे हैं और उसको हीव कर दिया ऑन साइड पर, बहुत बड़ा छक्का। लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के लिए ये फेवरेट लेंथ होती है। आप देखिए हजरतुल्लाह जज़ई भी जब लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं और इस लेंथ में होती है तो फिर डेफिनेटली बॉलर्स की पिटाई होती है और बड़ा शानदार छक्का लगाया। और इनकी हेल्थ भी हजरतुल्लाह जज़ई की तरह ही है, काफ़ी बल्कि हैं। ज़बीउल्लाह नन फॉर 16 बॉलिंग फिगर्स और एक दफ़ा फिर बॉल को पहुंचा दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम दानियल, अनस्टॉपेबल है यहाँ पर। एक दफ़ा फिर ऑन साइड पे खेलने में कामयाब हुए और एक लाइवली सा पेस है और लो फुल टॉस फ्रेंडली बॉल और बासानी पनिश किया। डिजर्व करते थे कि छक्का कंसीड करें इस बॉल पर। दानियल लेफ्टी इस वक्त भरपूर तरीके से छक्के लगाते हुए अपनी टीम के लिए और करंट रन रेट 19.11। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, अंपायर का इशारा वाइड। सो अब अगर टाइम लाइन देखी जाए इस ओवर की तो चौका, एक सिंगल
फिर एक दुक्की यानी 2 रन और फिर वाइड के 3 रन, फिर छक्का और फिर वाइड के 2 रन। बहुत ही महंगा ओवर है, 24 रन दे चुके हैं, कोई आउट नहीं किया और अभी वाइड भी किए। ओवर द विकेट आ रहे हैं, स्मैश कर दिया, 6 रन मिलेंगे एक दफा फिर, फ्लैट छक्का यहाँ पर। तो 30 रन उन्होंने दिए हैं ज़ैबुल्लाह ने और उम्दा बैटिंग इमरान और तानिया लेफ्टी की तरफ से। 5 ओवर्स हो चुके हैं, 94 पर 2। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी और मौका दिया कि बैट्समैन जो अपने आर्म्स को फ्री करें। थोड़ी देर के लिए फील्डर्स को लगा कि बॉल शायद उनकी तरफ आए, लेकिन बासानी होर्डिंग से काफी दूर जाके गिरी है गेंद। तो पेस भी नहीं है और लेंथ भी नहीं है, तो रन तो पड़ने देते आसिफ। ज़बीउल्लाह के एक ओवर में 30 रन बने और अब आखिरी ओवर का खेल है। अब तक बहुत बेहतरीन बैटिंग की है जौहर जवान्स के बैटर्स मिमरान और दानियाल लेफ्टी दोनों ही। अब मिमरान नॉट आउट हैं, 35 पर 10 गेंदों का सामना किया है। दानियाल ने 12 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं। आज 3 मैचेस खेले जाएंगे और ट्रिपल हेडर है आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल भी खेला जाएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम ही इस वक्त यकजान है क्रिकेट के पीछे। जी हाँ, बहुत बड़ा ओकेजन आज, और ना सिर्फ पाकिस्तान एशिया बल्कि पूरी दुनिया जो है एशिया कप को फॉलो कर रही है, क्योंकि जितने क्लिफ हैंगर हुए हैं इस एडिशन में उससे पहले किसी एशिया कप के एडिशन में नहीं हुए। और यहाँ पर छठा और आखिरी ओवर शुरू होने वाला है। आसिफ बॉलिंग करेंगे और वाइड का इशारा, वाइड से स्टार्ट किया इन्होंने। विकेट कीपर से फंबल ज़रूर हुआ लेकिन 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। तो अब 96 स्कोर हो गया और याद रहे कि इस फॉर्मेट में, इस कॉम्पिटिशन में 2 रन कंसीड माने जाएंगे वाइड की सूरत में। मिमरान 35, 10 गेंदों का सामना किया, 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। फुल टॉस पहुंचा दिया इसको, बाउंड्री की तरफ फील्डर आ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं और तकरीबन 2 गज ऊपर बॉल जाके गिरी और 6 रन का इशारा। तो वाइड के बाद छक्का यहाँ पर मिला, ऑल्दो कि इतनी अच्छी टाइमिंग, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, लेकिन 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। आसिफ की जानिब से यॉर्कर करने की कोशिश, लेकिन इसको फुल टॉस बना लिया और ये देख सकते हैं कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। अच्छी गेंद इनसाइड एज और 1 रन बनेगा और डायरेक्ट हिट हुई है और अंपायर ने ऐसा लगता है कि इसको थर्ड अंपायर की जानिब रेफर किया है। जी हाँ, अच्छी थ्रो यहाँ पर और बहुत बेहतर बॉल थी, जिस तरह की बॉल वो करना चाह रहे थे उससे पहले। यॉर्कर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, इनसाइड एज हुआ। आमतौर से स्टंप से भी बॉल लग जाती है, लेकिन लेग स्लिप पे खड़े फील्डर या डिफाइन लेग रादर उनकी तरफ से ये थ्रो आई और करीबी मामला हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें कि बैट्समैन जो थे वो पहुंच चुके थे। तो 1 रन का इजाफा होगा टोटल में, स्कोर हो गया 103 रादर। एक माइलस्टोन अचीव किया है जौहर जवान्स ने और दानियाल लेफ्टी जो है वो अपने पर्सनल माइलस्टोन से सिर्फ 10 रन दूर हैं। 12 गेंदों पे 40 रन, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इनिंग्स। डाउन द लेग साइड 4 रन मिलेंगे, इनफैक्ट ये 6 रन हो सकते हैं। जी हाँ, और बिल्कुल भी विकेट कीपर की रेंज में नहीं थी बॉल और फील्डर जो थे वो भी डीप में नहीं थे, तो गिफ्टेड 6 रन। 2 रन वाइड के और ये इसे 4 रन, तो टोटल एक्स्ट्रा 6 हो गए। ये किस लाइन पर बॉल करना चाहते थे बॉलर, कुछ विकेट कीपर भी समझने से कासिर रहे और आसिफ नाम के लोग हमेशा कुछ कारनामे करते हैं, तो देखते हैं वाइड की सूरत में। 15 रन दिए पहली 2 गेंदों पर आसिफ ने और इस दफा इसको खेले मिड विकेट की जानिब, शानदार छक्का, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको टाइम किया और जबरदस्त रेस्ट वर्क और विकेट बॉलर और फील्डर दोनों ही बस देखते रह गए। कलाइयों का बहुत ही उम्दा इस्तेमाल और बहुत बेहतर बॉल थी है, लेकिन उम्दा टाइमिंग, अच्छी
अच्छी टाइमिंग और कलाइयों का बहुत उम्दा इस्तेमाल। फ्लैट शॉट था ये, फील्डर के पास मौका लग रहा था लेकिन इन दी एंड होर्डिंग से बाहर जाके गिरी ये गेंद। और अंपायर का इशारा देखना होगा, एक दफ़ा फिर वाइड और यॉर्कर के बाद बाउंसर करना चाह रहे थे लेकिन काफ़ी ऊपर से गई। एक दफ़ा फिर 2 एक्स्ट्रा रन जौहर जवान्स के हक में गए। तो काफ़ी बड़ा ओवर है ये जौहर जवान्स का और ख़राब ओवर आसिफ की तरफ से। 23 रन दे चुके हैं और ये अभी आधा ओवर हुआ है, 3 बॉलें हुई हैं लीगल डिलीवरीज। और इस दफा फुल टॉस, इसको ओवर एक्स्ट्रा कवर खेले हैं और एक और शानदार छक्का, फ्लैट छक्का, जबरदस्त टाइमिंग। और जितनी भी तारीफ की जाए दानियाल लेफ्टी की कम है। फुल टॉस डिलीवरी, एक आ बैल मुझे मार। लेकिन फुल टॉस जरूर थी लेकिन बहुत ही उम्दा शॉट। शॉट को वो ऑन साइड पे भी खेल सकते थे लेकिन उन्होंने ऑफ साइड पे खेला। और दोनों शॉट्स में कलाइयों की बड़ी ज़रूरत होती है कि कलाइयों का कैसा इस्तेमाल आप कर रहे हैं और कितनी सलाहियत है आपके अंदर। तो बहुत ही उम्दा शॉट और पुल करने का है। वाइड का इशारा एक दफ़ा फिर, बहुत ही एक्सटेंडेड ओवर। और दानियाल ने 14 गेंदों पर अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं। ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा। अब 52 पर नॉट आउट हैं और दूसरी जानिब इस ओवर में रन्स बढ़ते जा रहे हैं और ओवर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि तवील तरीन ओवर करवाने का इरादा रखते हैं। शायद 50 कर लें इस ओवर में बॉलर। और एक दफ़ा फिर अंपायर का इशारा देखना होगा और रन तो भाग लिए दोनों बैट्समैनों ने, हैंड चेंज कर लिया लेकिन अभी भी अंपायर जो है वेट कर रहे हैं और नो बॉल का इशारा दिया है। तो 1 ऑफ द ओवर पहले हो चुकी थी शायद, तो ओवर जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आसिफ जो हैं वो खासे प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। जाहिर है कि जब दानियाल लेफ्टी और मिमरान दोनों ही बैटर्स खासी पिटाई कर रहे हैं तो आसिफ का प्रेशर में आना जो है वो नेचुरल है। और इस दफ़ा मिमरान ऊंचा खेले हैं फील्डर बॉल के नीचे। एक आसान कैच ज़रूर लिया लेकिन ये फ्री हिट थी, सो नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा लेकिन बहरहाल नुकसान पहले ही बहुत हो चुका है और 35 रन दे चुके हैं वो और अब शायद एक बॉल रह गई है। जी हाँ, शानदार टोटल पोस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी 129 पर 2। देखते हैं कि अब फिनिशिंग टच क्या होता है इस इनिंग्स का। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की और इस दफ़ा कदरे बेहतर लाइन, इसको सीधा खेला और यहाँ पर 2 रन्स आसानी मिल जाएंगे। सो इस तरह 6 ओवर्स के इख्तिताम पर 131 रन जौहर जवान्स बनाने में कामयाब हुए हैं। मिमरान ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 43 रन बनाए 13 गेंदों पर। दानियाल ने अपनी 50 स्कोर की, 55 रन बनाए 16 गेंदों पर। एक पार जैसा स्कोर 131 पर 2 6 ओवर्स के बाद और उम्दा बैट्समैनशिप। ऑल दो के फलक जो है कि माइनस बैट्समैन वो जल्दी आउट हो गए थे लेकिन मिमरान और दानियाल लेफ्टी की बड़ी उम्दा पार्टनरशिप और साथ इनडिसिप्लिन बॉलिंग भी रही, वाइड बहुत ज़्यादा रही और जिसके नतीजे में बैटिंग साइड जौहर जवान्स को फायदा हुआ। ये स्कोर कार्ड हमारे सामने। 55 दानियाल लेफ्टी, 16 गेंदों का सामना किया। नासिर 5 ऑफ 4, फलक 0 पे आउट हुए और मिमरान की 43 रन की उम्दा इनिंग्स, सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया। 6 ओवर्स में 131 पर 2 और 28 एक्स्ट्राज भी शामिल हैं इस टोटल में। बॉलिंग कार्ड 32 बगैर किसी नुकसान के फरहाद, 31 पर 2 रबाडा, 30 पर कोई आउट नहीं और 37 पर 0। और आसिफ नुमाया रहे, 37 रन दिए एक ओवर में, लेकिन इमरान नज़ीर ने 48 रन दिए थे एक ओवर में सुपर सिक्सेस के फाइनल में। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे लाइव एक्शन के साथ। Get ready for Badar Expo KTPL Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League.
Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sector. Welcome back again from North Nazimabad, Karachi, Asghar Ali Shah Cricket Stadium, where KTPL Season 2 is taking place. And there we see the two openers from North Nawabs going out to bat, and it's going to be flurries of boundaries, it looks like, because they've got a very good side, and they got spanked for too many sixes as well, because Johar Jawans batted brilliantly well. I think they've scored 131 in their allotted 6 overs. Particularly, they tonked them in last 3 overs massively, and they were hitting the ball almost in every part of the ground. Now we can see the two openers. They could be dangerous as well, have come out to bat, and let's see what the strategy. Fahad Mia Chunnu, another popular name. Of course, as his name is showing, he's from Mia Chunnu, and Fahad is his name. And then, of course, Khurram Chakwal, as we call, so he's from Chakwal. We are seeing Bravo here, we are seeing Rabada here, Khurram Chakwal, the captain, the right-handed batsman. First ball is coming up. And straight away, it has gone for the journey. What a magnificent way to start the innings off. Welcome, K. Asif. Well, it's been a brilliant shot. Look at that fantastic start from the Fahad Mia Chunnu. He got a good reputation with his captain, Khurram Chakwal. Both of them, they're really good hitters. Look at that. Started with this massive shot. He belted that one right off the middle of the bat. Shehzad is the bowler. That was a slower one, just a little outside the off stump as well. And umpire called it a dead ball. I think there was something going wrong with the fielder at the mid-wicket boundary. The fielder was talking to someone, and umpire called it a dead ball. Although I think it cost the fielding side, because that was a dot ball originally. Well, see the surrounding of this beautiful cricket stadium, Asghar Ali Shah Cricket Stadium. This is the North Nazimabad, and it's a very crowded place. Fahad Mia Chunnu striking and striking nicely. It's the boundary. The fielder, he has tried to stop it, and it's a no ball. It's a no ball, dear.
No ball is a crime. And had the fielder a couple of inches taller, that would have been caught as well. But it still would have gone in vain because that was a no ball. Once again, he was camping on the back foot and generating the force from the back foot. And that's what most of the batsmen do in tape ball. There's a conversation going on between captain. He's the Fahad Mia Chunnu. It's a very good striker of the ball. And we were talking about the surrounding areas of this Asghar Ali Shah Cricket Stadium. 12 for no loss after a one ball, which is the rarity. Only one delivery has been bowled and 12 runs already been raised on the board. And it's going to be caught. Fielder is under the ball. It's coming down now. And he grabbed it, but that's a free hit. That's a free hit. This is the price which you pay when you bowl the no ball, when you bowl a no ball. That's right, and you can see that Fahad Mia Chunnu looks very dangerous. Scored a maximum, started his inning in a tremendous style, isn't it? And when we talk about that, you're chasing 130 around in 6 overs. So this is the brilliant start. This is going, and has gone all the way. In fact, it traveled almost 20 to 25 meters away from the boundary. Big hit. Well, if you talk about Fahad Mia Chunnu, he is very good against short pitch deliveries. This is what we have observed in a couple of deliveries. Look at that shot. It's going out of the stadium actually. Lot of boundaries being hit. Flurries of boundaries, 21 all loss. Only 3 deliveries have been bowled. They're really making it big, the first over. Short, rising, had a go at that one. Couple of runs because umpire called it a wide. This over becoming a big one, turning out to be an expensive one. Well, so Nawabs of the North, they're smiling now. An ideal start when you're chasing in first innings, 130. Fahad Mia Chunnu is a big name of tape ball cricket, and with him, the king of Asia actually, Khurram Chakwal. Both are very renowned tape ball cricketers. Both have a very good reputation. That's a good delivery. It was aiming at the off stump and middle stump. Batsman got cramped for the space and he didn't have any room to hit that one through the leg side. A rare dot ball. Syed Nasir comes to the bowler. And had a bit of chat with him. Very well bowled, jogged him, perfectly bowled. Good comeback from the bowler. Shehzad, who went for 22 already, but last 2 deliveries were bang on target. Good bowling. It was a good delivery. Fahad Mia Chunnu, he also plays all the leagues of tape ball cricket all over the Pakistan and got a very good reputation in batting. He played for the Maho Champions League as well. He's an icon player. Last ball of the first over. And I'm telling you that this guy is unstoppable. What a shot that was. Another brilliant shot, a maximum towards mid-wicket area.
Probably hasn't timed as good as he would have loved, but still fetched it over wide mid-wicket boundary for 6. 28 came off the first over. This is the start which they wanted, and that was the last stroke. There we see it again. He picked that one from outside the off stump and then dragged it over mid-wicket. Good start for the North Nawabs, but they are still got a long way because they are still 103 runs away from Johar Jawans' first innings score. So it can be long grind for them. And Rana, when we talk about the evolution of tape ball cricket, this is the best of effort so far from the Badar Expo Karachi Tape Ball Premier League, gathering the talent all over the Pakistan and giving them this brilliant stage to showcase your talent, show up in front of the entire world that you are the best, you're doing best. A.B. Salam has been brought onto the bowling attack from the far end. Indeed, Asif, they are getting better and better as the time progresses, because we didn't have this Khurram, Chakwal, Taimur Mirza, etc., in the first edition, but in the second we have them. So it's a tremendous effort by Badar Expo, Karachi Tape Ball Premier League. Edged and taken quite easily. The leg slip or the short fine leg came behind the wicketkeeper and took that one gladly. It's a massive blow because King of Asia, Khurram Chakwal, has been gone now. The captain of North Nawab, look at the jubilation. They understand the importance of this wicket. Khurram Chakwal is going back. It's a very good delivery, a short pitch delivery. Trying to hit hard that on the top edge, and there is no mistake from the fielder. So first loss, Khurram Chakwal, the captain of North Nawab, departs on duck. And he's got a golden duck or a first ball duck. This is what cricket is all about. Today's hero can be tomorrow's zero, and today's zero can be tomorrow's hero. It's a very funny game. It's a great leveler. Difficult to predict anything in this cricket. One can go mad, one can go crazy at any stage of the game, and game changes. It is absolutely hot out there in the middle, but our production team working really hard. They're putting a very good effort in. Technical staff, camera crews, producers, everyone working with soul and heart. They're putting a tremendous effort in. Second over is getting underway. In fact, this is the second ball of the second over. I beg your pardon, Asif. This is the best length. When you go for the short pitch deliveries, quick bounces, and this is the dugout actually of North Nawab, appreciating their team, of course. And I was surprised when you were bowling against Khurram Chakwal and you have planned to bowl him out a quick short pitch delivery. It means that you have read him out and you understand that where he is lacking actually. It's an over pitch delivery and got the punishment. It's going out of the park. A brilliant shot. What a maximum that is. That's not on. Don't feed them there. Don't feed them there. If you feed them there, they will whack you all day long. What a tremendous shot. Pitched up and got spanked back over long on. There you see. That one travelled many a miles, as we use this term usually in commentary. Although it hasn't travelled a single mile, I can tell you that as well. Abdul Salam. So well
done this time, and whenever you get boundary or you get hit maximum when you're trying to hit legs. I mean, this is the best thing, that when a batter standing very close to the stumps, and your stance. This is this typical stance in tape ball cricket, that the batters, they used to stand very close to the stumps. And what does it mean? That they are trying to get some time. This is what I asked to Naveed Latif, the former test cricketer that we used to watch, that the Michael Slater, he used to stand a couple of steps away from the popping crease, if you do remember. Yes, they have the solutions of short pitch ball and the Yorker. He edged it, fielder trying to reach the ball, but he couldn't, and finally it went away to the fine leg boundary for 4. 2 fielders were after the ball, but no one could get there. Bowler is not happy at all. Bowler is not happy at all. It's not a good effort from the fielder. Should have taken. It was high in the air, and fielder was not able to get this ball and even stop that ball. Actually, it's a boundary. Once again, look, I'm telling you, when you are coming with the short pitch deliveries, lots of difficulties for the batters, especially in tape ball cricket. Yeah, that was a good ball and well targeted as well. But I think that should have been stopped at any cost. So, of course, as you predicted quite rightly. I always have great respect for your predictions. Last ball of the second over. Actually, not the last ball. Yes, once again, hit couple of boundaries and a maximum. And the viewers who joined us right now, we should share with you, inform you that the wide delivery and the no ball delivery will get 2 runs. 40 for 1. We are in the second over. Runs coming at a very swift pace, as we saw in the first innings as well. Johar Jawans getting 131 in their allotted 6 overs, and they are replying even harder. 40 for 1 in 1.5 overs. Run rate is more than 20 per over, although they've lost a very important wicket in the process, and that was of their captain Khurram Chakwal, who got a first ball duck. This one is sprayed away, and played away extremely well, and it has gone all the way for another 6. Great batting. 46 for 1. 2 overs have been bowled. Well, it's a brilliant shot. It's a very good shot from Hafiz, and Abdul Salam concluded his first over, given 18 runs, and now 85 runs more require. And they've got 24 deliveries to play with, and they've got 9 wickets in hand. And both batters are doing a good job. Fahad got 24 of 7, and Hafiz got 16 of 5. And Hafiz Pola, also a very renowned name, Asif, in table cricket. Yes, that's right. Fahad Mia Chunnu, as you mentioned that he's from Mia Chunnu, played all the leagues from all over the Pakistan. He's got a good reputation in his batting. The way he started today, it's been brilliant. And same with the Hafiz. Hafiz is a very renowned name in tape ball cricket. And he scored already 16 on 5 deliveries, got 2 maximums. One from over long on, and then on the last delivery on the flag, it was a perfect shot, isn't it? Indeed it is. And I love Mia Chunnu as well. You know why? No, my wife is from Mia Chunnu. So it's a long story, isn't it? Oh yeah, can't tell you here. Third over is beginning. Oh, well bowled, very well bowled. He brought that one in towards the batsman in there. That was a good ball from Jahangir. Spot on. Yes, that's right. Targeting his legs and a Yorker length delivery. This is called a block hole, and of course that it always helps to the bowling side. Jahangir is a very good bowler. Look at his bowling action, and this time it's a brilliant shot. Look at that timing.
right out of the middle of the bat, and it's gone over the park for the maximum. Yes, hit that one effortlessly. As I was mentioning, don't bowl them there. Don't feed them there. You will be getting spanked all the way and all day long. Now, look at that, his wrist work. I like it, you know, that whenever you're trying to bowl the Yorker, it does like you're playing a helicopter shot using your wrist outside the off-stump delivery, and again 2 runs. The last stroke he didn't try to hit too hard, but played that one beautifully and hit that one through the line. So that was a terrific stroke by Fahad Mian Chunnu. He looks in very good form, 30 of 9 deliveries and pelting them about. Edge and almost taken, but dropped. Didn't carry actually. It was a very good effort. How often we see that? How often we see that? He edged it, wicketkeeper couldn't quite get there, and it dropped just in front of the fielder who was standing just by the side of the wicketkeeper, and then it travelled away to the boundary for 4. 4 lucky runs. He's lucky getting his second chance. Look at that, travelling towards boundary. So lucky boundary for North Nawab. 73 still require. It's the third over, and this time again, very good shot in the extra cover region. This is the perfect cricket shot. Best of the lot. Outside the off stump, he punched off the back foot and he drilled that one through the covers. That was a magnificent, look at that, stood and delivered. What a magnificent shot. KTPL season 2 on its peak. Wow. This shot reminds me the greatest batter from India, Virender Sehwag. Yes, he had a great hand and eye coordination, although he didn't have best of the footworks. But Sehwag played extremely well throughout his career. And this one is worked away onto the onside. Fielder is there back at the boundary. Who got the ball? Single has been taken. So both teams have batted extremely well so far in this match, Asif. Yes, that's right. You know, they're 62 for 1 and 69 require. The run rate is good. Started well. Fahad Mian Chunnu looks very nice with his bat. The timing is so good. Though Khurram Chakwal is not on the strike, back into the pavilion, into the dugout, but still hopes are high with the Fahad Mian Chunnu. So last delivery of the third over. Hafiz, another very good prospect for North Nawab. Hitting high in the air, and I think once again it's over the ropes for the maximum in the extra cover region. What a way to finish the over. What a terrific way to end the over. It was outside the off stump, it was in his arc. Look at that, full toss, and he dispatched it over extra covers for a massive 6. As long as these two stay, runs will be coming like this. 3 overs bowled, 69 for 1. So 3 overs have been done, 69 for 1, and now commentary going to be picked up by Naseem Rajput and Sadiq Muhammad. Thank you very much, Rana Ashfaq and K. Asif. हाई स्कोरिंग मैच अगर हम देखें तो फिर अब तक ये दिन का वाहिद मैच है, क्योंकि उसके बाद से कल से दोबारा टाइमिंग सेम हो जाएगी और मैचेस का आगाज़ अपने वक्त के मुताबिक 6:45 बजे होगा. Welcome and good afternoon, the great former Test cricketer and senior vice president Badar Expo KTPL Sadiq Mohammed साहब. वैसे सादिक भाई एक बार वालेकुम सलाम सादिक भाई और तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम हमारी जानिब से भी. सादिक भाई वैसे ओवरऑल देखें तो एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KTPL ज़ुहैर नसीर साहब एंड बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एक डिफरेंट लेवल पे ले गई अपने सेकंड एडिशन में ही, और पूरा पाकिस्तान तमाम प्लेयर्स आने के बाद खासे मुतमईन तो होंगे आप. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने इसके ऊपर काम किया है, इस प्लेयरों के को का जो चुनाव है वो बहुत वाकई
बहुत ही अच्छा है और एक टेलीवाइज मैच के लिए वाकई कुछ नज़र आ रहा है। और एक और जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ फहद मियां चुन्नू का, गेंद गई मियां चुन्नू, जबरदस्त किस्म का स्ट्रोक क्या, क्योंकि मियां चुन्नू से ताल्लुक है फहद का, इसलिए फहद मियां चुन्नू कहलाते हैं। और वाकई में जितनी बड़ी हिट लगा रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें कितना कैलिबर इन प्लेयरों के अंदर है। और एक और ये आउट होने का खतरा, मगर फील्डर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और 2 रन का इजाफा और हुआ टोटल के अंदर। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 3 ओवर के अंदर 3.2 ओवर में 77 का हदफ है अभी तक टोटल है। और जो पहली इनिंग का हदफ जो चेस कर रहे हैं वो कितना है, वो 110 का हैगा ना मेरे ख्याल से। हाँ जी, 131 रन स्कोर किए थे आज पहले बैटिंग जब की थी। एग्जैक्टली। और अभी तक इक्वल मैच है। फहद मियां चुन्नू की विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुर्रम चकवाल को जल्दी आउट कर लिया था आज बिल्कुल जौहर जवान्स ने, लेकिन नॉर्थ नवाब की टीम को एक कमक मिल गई है। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप देखें बॉलरों को यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि फुल लेंथ बॉल को वो बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, तो गुड लेंथ बॉल जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको छक्का मारने के लिए, क्योंकि गुड लेंथ बॉल के लिए पैरों का इस्तेमाल होगा सब। मगर क्योंकि ये ऑलरेडी और यॉर्कर लेंथ पे बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पर जितने भी बॉलर्स हैं या कप्तान हैं वो एक चीज़ के नोट नहीं कर रहे हैं कि टेक्निकली जितने भी बैट्समैन हैं वो क्रीज के अंदर खड़े होते हैं और वो 1 फुट दूर स्टंप से होते हैं, तो उनको जजमेंट का जो है लेंथ ऑफ द बॉल का ज़्यादा उनको जायज़ा हो जाता है, तो इसलिए शॉट्स जो हैं वो लग रहे हैं। और शॉर्ट बॉल जो है अच्छा बॉल भी है वो शॉर्ट बॉल होता है, क्योंकि 2 से 3 फुट क्रीज के अंदर खड़े होके मार रहे हैं ये। और एक और यॉर्कर लेंथ पर 2 मुसलसल शहजाद की डॉट बॉल, वेरी वेल बोल्ड शहजाद। पिछली गेंद भी सेम लेंथ पर थी, यॉर्कर लेंथ पर थी। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे सादिक भाई, मोस्टली बैट्समैन जो हैं वो बिल्कुल स्टंप्स के साथ लग के खड़े होते हैं, ना सिर्फ क्रीज के अंदर होते हैं बल्कि स्टंप्स के साथ लगे होते हैं, तो उनको जजमेंट का मौका मिल जाता है। अगर शॉर्ट पिच गेंद भी होती है तो एडजस्ट कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आई थिंक कि इसके अंदर बॉलर जो है उसको और कप्तान जो है उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बॉल बेस्ट हो रही है। मैं समझता हूँ कि जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, अगर गुड लेंथ के ऊपर फेंकेंगे तो इतना मारना इतना आसान नहीं होगा, या बिल्कुल फुली यॉर्कर हो। और एक और जोरदार हिट फहद मियां चुन्नू की, एक और जोरदार छक्का। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने टाइम किया। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि फील्डर 2 फुट अंदर खड़े हुए हैं क्रीज के, इसलिए जो गुड लेंथ का बॉल भी जो होता है वो शॉर्ट बॉल हो जाता है, तो इनको वो 2 फुट और आगे बॉल करने की ज़रूरत है ताकि डॉट बॉल करें या एक रन बने उसमें। और इस छक्के के साथ सादिक भाई फहद मियां चुन्नू ने अपनी निफ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है और अभी 4था ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, तो उस लिहाज से अभी 2 ओवर बाकी हैं और अपने टारगेट के मुताबिक चल रहे हैं अब तक। 4 ओवर में 83 रन स्कोर कर लिए, 132 रन एटलीस्ट लीड हासिल करने के लिए करने होंगे। यहाँ लीड करने के लिए अभी भी 40 रन की जरूरत है लीड हासिल करने के लिए। 49 रन दरकार है अगले 2 ओवर में। अगले 2 ओवर में जो कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि लगता है कि वो करीब पहुंच जाएंगे। मैं आपकी बात समझ गया। हाफिज पोला हैं इस वक्त स्ट्राइक पे और ये दोनों बैट्समैन जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं ये पहली मरतबा बदर एक्सपो KTPL का हिस्सा है। और जितने लोगों से कल मेरी जैसे तैमूर मिर्ज़ा से बात हो रही थी, अभी खुर्रम चकवाल से बात हो रही थी, दे आर क्वाइट हैप्पी
कि वो इस इवेंट का हिस्सा बने। और इस बार मिड विकेट बाउंड्री के बाहर नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर छक्का लगाया हाफिज पोला ने। और ये छक्का मारने के बाद इनका एक स्टाइल है, ये बैट को जमीन पे मारते हैं, जो इनका एक फेमस स्टाइल है, पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। अच्छा, मैंने अभी तक नोट नहीं किया था, मगर अब नोट आपको करूंगा। अभी दिखाते हैं। ये छक्का मैं लगाने के कि बाद इस गेम के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिनर्स जो हैं वो बहुत जरूरी है। इस छक्के के बाद देखिएगा ये इनका छक्का और ये बैट मारा उन्होंने, ये एक स्टाइल है इनका जी। अब इसके अंदर एक जो जो शॉर्ट थर्ड विकेट कीपर के पीछे जो फील्डर खड़ा है वो एक वेस्ट है, क्योंकि उसको बाहर निकालें तो उसको एक्स्ट्रा कवर पे रख सकते हैं या डीप मिड विकेट पे रख सकते हैं। इन फ्रंट में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मिडॉन में कोई फील्डर एक है, मगर मैं कहता है जो शॉर्ट थर्ड में जो रखा हुआ है विकेट के ऊपर के पीछे, उसको बाहर निकाल के डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रखा जाए। हाफिज पोला की एक और आउट होने का खतरा है यहाँ पर, और इस तरह ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा नॉर्थ नवाब को। हाफिज पोला पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच आउट हुए। मच नीडेड विकेट फॉर जौहर जवान। सादिक भाई वेरी गुड बॉलिंग, थोड़ा सा स्लोअर गेंद था, इसलिए जो टाइमिंग बिटवीन बैट एंड बॉल जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ। जब तेज़ गेंद करते हैं और बैट के जो स्पीड होती है स्विंग की, वो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बॉल का जो टाइमिंग बिटवीन बैट एंड बॉल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फास्ट हो जाता है। और थोड़ा सा स्लो गेंद किया इन्होंने तो उसके अंदर टाइमिंग में फ़र्क आया कि बैट का स्विंग बहुत जल्दी हुआ और बॉल वहाँ पे लेट आया, तो इसलिए वो बाउंड्री लाइन के पास ही कैच हुए। वो 2 साइड बैट्समैन में से एक आउट हो गया। अभी फहद मियां चुन्नू मौजूद हैं, लेकिन हाफिज पोला 34 रन बनाने के बाद आउट हुए, और ये रन इन्होंने स्कोर किए 9 बॉल पे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ स्कोरर उबैद मौजूद हैं। सादिक भाई कुछ इंटरेस्टिंग हो गया मैच, वरना ऐसा लग रहा था कि लीड लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ लीड ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा लीड नहीं होगी इसलिए क्योंकि अभी भी 1 ओवर 1.5 ओवर अभी बाकी है। 9 बॉलों में 30-40 रन और हो सकते हैं, मगर इनको कैलकुलेशन इनका सही होना चाहिए कि जितना पहली इनिंग का जो टोटल है उसके करीब करीब पहुंचेंगे तो ये मैच ओपन रहेगा दोनों टीमों के लिए। दूसरा एक ये है कि एक और स्लोअर वन, 2 मुसलसल स्लो बॉल्स से रिसीव किया इन फॉर्म फहद चुन्नू को, जो 50 रन ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। बड़ा रिसीव करना है ऐसे मौके पे, स्लोअर वन करना बहुत बहादुरी है। बिल्कुल, आई थिंक बहादुरी नहीं, अक्लमंदी है ये। अक्लमंदी से गेंद कर रहे हैं ये तो, क्योंकि जितना तेज़ गेंद करेंगे, जितना बैट के स्विंग की स्पीड है और बॉल की स्पीड दोनों कंबाइन होके बॉल ज़्यादा दूर चला जाता है। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं होगा। 4 रन हासिल किए यहाँ फहद मियां चुन्नू ने। फहद मियां चुन्नू का बैट रन उगलता हुआ, अब तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। सिंगल हैंडेडली अपनी टीम नॉर्थ नवाब को लेके चले हैं ऐसे वक्त में जब उनके कैप्टन खुर्रम चकवाल बहुत जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद हाफिज पोला ने किसी हद तक उनका साथ दिया, काफ़ी हद तक उनका साथ दिया, लेकिन फहद मियां चुन्नू एक एंड से स्कोर संभाले हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कि इनको ये पूरी ओवर खेलनी चाहिए कि पहली इनिंग के हदफ के करीब करीब पहुँचे, ताकि सेकंड इनिंग का जो खेल अब बाकी है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोनों टीमों के बैट्समैन जो हैं वो काफ़ी फॉर्म में लग रहे हैं, और क्योंकि ये मैच बिल्कुल कड़ी धूप में हो रहा है और दोपहर के वक्त है, तो इसलिए जो बॉल का जो स्विंग है वो काफ़ी महदूद हो गया है, और उसकी वजह से बॉल जो है वो ज़्यादा डिविएट नहीं कर रहा है ऑफ द पिच, नाइदर इन द एयर। तो इसकी वजह से उनको रन जो बन रहे हैं
वो इसकी वजूहत यही है कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा है और ना सीम हो रहा है। जबीउल्लाह नए आने वाले बैट्समैन, शफीउल्लाह नए आने वाले बैट्समैन है और इनसाइड एज लगा, यूं विकेट हासिल हुई। तीसरा नुकसान नॉर्थ नवाब को उठाना पड़ा जब शफीउल्लाह आउट हुए और अब भी 99 रन थे इस बॉल से पहले 5 ओवर के इख्तिताम पर। इसका मकसद है कि आपको एटलीस्ट 32 रन्स दरकार होंगे इस स्कोर तक पहुंचने के लिए। क्या लग रहा है आपको, लीड कौन ले रहा है सादिक भाई? अब जो है जौहर जवान को लीड मिल जाएगी, इसलिए कि 5 बॉलों के अंदर जो आने वाले बैट्समैन हैं वो बिल्कुल नए हैं और जो सेट बैट्समैन है वो बॉलिंग एंड पे है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने से ज़्यादा डॉट बॉल किया जाए ताकि चुन्नू जो हैं वो वहीं बॉलिंग एंड के ऊपर ही रहे। आप ये कह रहे हैं कि वो मियां चुन्नू में ही रहे, स्ट्राइक पे आए नहीं, स्ट्राइक उनको नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए आने वाले बैट्समैन की कि फहद मियां चुन्नू खासा टाइम क्रीज पर गुजार चुके हैं, उनको स्ट्राइक दिया जाए ताकि एटलीस्ट अगर 3 छक्के भी यहाँ लगते हैं तो 120 के करीब रन स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो 11-12 रन बहुत बड़ी लीड नहीं होगी, इतनी बड़ी लीड नहीं है जो कि 1 ओवर के अंदर आराम से कवर हो जाती। तो आई थिंक नॉर्थ नवाब ने काफ़ी इन आखिरी ओवर के अंदर काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। यहया बैटिंग के लिए आए और इस बार एक और विकेट यहाँ गिर गई है और यहया आते ही पहली गेंद पर आउट हुए। इस तरह ये चौथा नुकसान हो गया नॉर्थ नवाब की टीम को, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था आखिरी 2 ओवर्स में ये कम से कम स्कोर के करीब पहुंच जाएंगे या एटलीस्ट कुछ लीड भी ले लेंगे। आई थिंक कि ये 20 रन का लीड मिलेगी जौहर जवान को पहली इनिंग में। और ये जो बॉलर हैं ए बी सलाम काफ़ी अच्छी स्पीड से गेंद करते हैं और आई थिंक कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई सेलेक्टर्स या कोई देख रहे हैं तो आई थिंक अभी तो ये टेप बॉल से गेंद कर रहे हैं, मगर इनका थ्रू दी एयर जो बॉल है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से निकलता है, छूटता है हाथ से और पड़ने के बाद भी अच्छी खासी स्पीड रहती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीसीबी के कुछ कोचेज़ वगैरह इनको देख रहे हैं तो इसको गौर से देखें इस बॉलर को। आई थिंक इज़ ए गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इनको ट्राई किया जाए। आई थिंक इज़ वेरी गुड। अगर उनका देखें कि काफ़ी तेज़ अंदाज में छोटा सा रनअप है मगर स्पीड जो आर्म का जो स्विंग है वो बहुत तेज़ है। और ये श्रीलंका का कौन सा बॉलर है? मलिंगा की स्टाइल में ये गेंद करते हैं और ज़्यादातर ये एक ही बॉलर अभी तक मैंने पूरे 2 दिन के मैचेस के अंदर देखा है जो कि बैट्समैन को खिलाते हैं। अबू सलाम का ये ओवर अब तक खासा बेहतर रहा, पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की और तीसरी गेंद पर सिर्फ सिंगल दिया। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि स्ट्राइक आ गया है फहद मियां चुन्नू के पास जो बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए इस इनिंग में और ये 3 गेंदें फहद मियां चुन्नू को ही खेलनी चाहिए एटलीस्ट जितने छक्के लगा सके यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। और जो हम कह रहे थे इस बार फहद मियां चुन्नू सिर्फ रन नहीं लिया उन्होंने, इसीलिए रन नहीं लिया। इज दिस अ गुड डिसीजन? इट इज अ गुड डिसीजन क्योंकि यही एक प्लेयर ऐसा है जो फॉर्म में है और स्ट्राइक अच्छी कर रहे हैं। इस आखिरी ओवर की वजह से जो अब्दुल सलाम ने ओवर किया जौहर जवान्स के लिए नॉर्थ नवाब की दुश्वारियां बढ़ती हुई दिखाई दी और इस वक्त सूरत हाल यह है कि 100 रन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, 31 रन मजीद करने जो अब तकरीबन नामुमकिन टास्क हो गया। आखिरी 2 बॉल्स बाकी हैं और एक मरतबा फिर फहद मियां चुन्नू पहले रन के लिए तेजी से जोड़े, दूसरे रन के लिए लाजमी तौर पे वापस आएंगे लेकिन फहद मियां चुन्नू रन आउट नहीं हुए, यहाँ पे बिलाल शाह रन आउट हुए। इस तरह स्ट्राइक फहद मियां चुन्नू को मिल गया, 1 रन भी मिल गया, 101 रन हो गए, 30 रन अब भी पीछे हैं सादिक मोहम्मद। जी हाँ बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छी गेंद की लास्ट 2 ओवर में जौहर जवान ने बहुत अच्छी गेंद की है
और विकेटों के अंदर गेंद रखी, जिसकी वजह से उनको 2 या 3 विकेटें भी मिली और सेट बैट्समैन चुन्नू को नॉन स्ट्राइकर पे रखा। अभी इनको सिर्फ 3 बॉल मिले हैं, जिसमें एक ओवर अब कुछ डिसाइड करना है कि रन आउट कौन हुआ, ये अब देखना है। मेरे ख्याल से चुन्नू जो है वो रन आउट हो गए। नहीं, चुन्नू रन आउट नहीं हुए। चुन्नू क्रॉस मेरे ख्याल है क्रॉस कर गए थे शायद, जिस वक्त ये देखें ये क्रॉस कर गए जिस वक्त रन आउट किया है। तो बिलाल शाह ही रन आउट हुए हैं। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों बैट्समैनों की, टाइमली क्रॉसिंग कर ली थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड अंपायर अभी इसी चीज़ को चेक कर रहे हैं। दोनों बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगा कि फहद मियाँ चुन्नू क्रॉस कर गए थे और बिलाल शाह रन आउट हुए, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे उस वक्त बिलाल शाह दौड़ रहे थे। एक मरतबा फिर दोनों अंपायर्स थर्ड अंपायर से मशवरा करते हुए, ताकि इस डिसीजन को लेने में कोई दुश्वारी ना हो। एग्जैक्टली, आई थिंक अब देखना है कि ये इन्होंने क्रॉस किया या नहीं, थ्रो करने से पहले क्रॉस किया या नहीं किया, ये भी देखना है। ये देखिए ड्राइव किया था या थोड़ा सा फंबल कर गए थे फील्डर, लेकिन गेंद उनकी रीच में ही थी और अच्छा थ्रो उनका। जिस वक्त रन आउट किया है फहद मियाँ चुन्नू, क्रॉस किया या नहीं किया, ये थर्ड अंपायर अब बताएंगे, जिनका हम इंतजार करें। जो एक कंट्रोवर्सी चली थी जो लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, बैन स्ट्रोक्स वाली कि उन्होंने थ्रो करने से पहले क्रॉस किया था या नहीं किया था। इस वक्त थर्ड अंपायर को रेफर किया है। आई थिंक 2 मरतबा देखने के बाद अब डिसीजन आ जाना चाहिए, क्योंकि खासा क्लियर था, या क्रॉस कर सकें या नहीं कर सकें। साइड देखना ये है कि साइड कैमरा जो अंपायर इस वक्त हेड विकेट भी चेक कर रहे हैं। अभी हमें प्रोडक्शन टीम ने बताया कि थर्ड अंपायर, और ये देखना है कि यहाँ पर उनका पैर आया, टकराया या नहीं टकराया। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पैर नहीं टकराया है, लेकिन ये जब वो दौड़ना उन्होंने, वैसे ही इस सिलसिले में इतना क्रीज से लग के खड़े होते, बड़ी प्रैक्टिस है इनकी, हेड विकेट नहीं होते हम खुद सोचते हैं, और ये प्रैक्टिस है। और चुन्नू आउट दे दिए गए, चुन्नू को आउट दे दिया गया। और ये देखना होगा कि ये रन आउट हुए या हेड विकेट इन्हें आउट करार दिया गया है। लेकिन फहद मियाँ चुन्नू आउट हो गए हैं। वेरी वेल प्लेड फहद मियाँ चुन्नू, 58 रन्स ऑन 23 बॉल्स, वेरी गुड बैटिंग। और फिर फहद मियाँ चुन्नू बाहर आ गए। ये थोड़ी सी अंपायरिंग समझ में नहीं आ रही सादिक भाई। नहीं, आई थिंक रन आउट के अंदर तो अगर देखा जाए तो फहद ने क्रॉस कर लिया है, मगर कैमरे की आँख जो है वो हर जगह कैमरा लगा हुआ नहीं है, ताकि ये देखना है कि नए रूल के मुताबिक इन्होंने क्रॉस किया था या नहीं किया था थ्रो होने से पहले। असल में 2 चीज़ें चेक कर रहे थे। अभी हमारी प्रोडक्शन टीम ने बताया कि थर्ड अंपायर 2 चीज़ें चेक कर रहे थे, एक क्या फहद मियाँ चुन्नू हेड विकेट हुए, और सेकंड वो चेक कर रहे थे कि रन आउट कौन हुआ है। तो जो डिसीजन पहले था कि बिलाल शाह रन आउट हुए थे वही हुआ, ना हेड विकेट हुए थे, और आखिरी बॉल अब फहद मियाँ चुन्नू ही खेलेंगे। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, अब्दुल सलाम, और एक और शानदार गेंद अब्दुल सलाम की यॉर्कर लेंथ पे। यहाँ एक और विकेट ज़रूर गिर जाएगी, लेकिन विकेट गिरने का कोई नुकसान नहीं, रन्स नहीं बना, ये एक बड़ा नुकसान है। इनिंग ख़त्म हुई नॉर्थ नवाब की 101 पर 6 खिलाड़ी आउट हुए। मुकर्ररा 6 ओवर्स में 131 रन स्कोर किए थे जौहर जवान्स ने पहले बैटिंग करते हुए। इस तरह 30 रन की बड़ी लीड हासिल हो गई है। सादिक भाई 30 रन बड़ी लीड है, काफ़ी बड़ी लीड है, और इसका मतलब ये है कि अगर पहली ओवर 20-22 रन की नहीं गई तो ये जौहर जवान को जौहर जवान को अब जो 30 रन ये है, तो 70 या 80 रन भी अगर ये करेंगे ठीक से तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि 30 रन की लीड है, इनको 80 रन करने पड़ेंगे। और ये सादिक भाई बैटिंग कार्ड पे एक नज़र डालते हैं। फहद मियाँ चुन्नू ने 58 रन स्कोर किए 23 बॉल्स पे, 34 रन स्कोर किए। हाफिज पोला ने, बाकी कोई दूसरा बैट्समैन 1 रन से ज़्यादा नहीं बना सका।
डक हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दिए इस इनिंग में। ये बॉलिंग कार्ड 3 विकेटें हासिल की अब्दुल सलाम, वेरी वेल बोल्ड 20 रन देने के बाद, और एक खिलाड़ी आउट किया अफान ने। इस तरीके से ये विकेट गिरी आपके सामने। 101 रन पे इनिंग मुकम्मल हुई नॉर्थ नवाब की। और ये इनिंग की हाइलाइट्स अभी देखते हैं कि फहद मियां चुन्नू ने पहली गेंद पे आते ही छक्का लगा के अपने इरादों को जाहिर कर दिया था। और ये खुर्रम चकवाल आज जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से इनको लीड लेने में खासी दुश्वारी हुई। ये शानदार छक्का है यहाँ पे फहद मियां चुन्नू का। और ये फहद मियां चुन्नू का एक और पुल शॉट, जो थोड़े से फील्डर्स भी डिसीव हो गए और बाउंस लेके गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक फहद मियां चुन्नू को ऑन द टोज, शानदार छक्का। और इस बार ये यहाँ लकी रहे थे फहद मियां चुन्नू के, विकेट कीपर के ऊपर से भी गेंद गई और स्लिप भी कैच नहीं कर सका। ये अच्छा ड्राइव था, शानदार स्ट्रोक यहाँ फहद मियां चुन्नू का। आज फहद मियां चुन्नू नॉर्थ नवाब की इनिंग के हीरो रहे यहाँ पे। और ये सामने की जानिब जोरदार छक्का फहद मियां चुन्नू का। इस बार मिड विकेट की जानिब स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए थे फहद मियां चुन्नू और 6 रन हासिल किए। ये हाफिज पोला एक्स्ट्रा कवर की जानिब उन्होंने छक्का लगाया। और ये हाफिज पोला दूसरा छक्का जो उन्होंने लगाया था वो ग्राउंड के, ये कैच आउट हुए थे यहाँ पर हाफिज। और ये इनसाइड एज लगा यहाँ पर, ये कॉट बिहाइंड हुए। तो ये जो लास्ट ओवर था अब्दुल सलाम का, जिसमें 3 खिलाड़ी आउट हुए, 1 रन आउट हुआ, 2 रन आउट हुए, तो 5 विकेटें गिर गई आखिरी ओवर में, जिसपे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्त थी। और अगर फहद मियां चुन्नू ने भी जो बॉल्स खेली, 3 बॉल खेलने का मौका मिला, वो भी बड़ी हिट नहीं लगा सके। वेल बोल्ड अब्दुल सलाम। बिल्कुल, अब्दुल सलाम ने बहुत अच्छी गेंद की है, विद इन द स्टंप्स गेंद रखी है और इसी की वजह से उनको 30 रन के लीड मिल गई है। तो आई थिंक के जौहर जवान को बहुत ही मोहतात तरीके से 80 रन भी 80 या 90 रन भी बनाएंगे तो उनको 120 रन की का हदफ नॉर्थ नवाब को चेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, नॉर्थ नवाब की टीम में आज कई चेंजेस हुई थी, कई नए प्लेयर्स भी टीम में आए थे और वो वाकई में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आने वाला वक्त मुश्किलात से दो चार कर सकता है जौहर जवान्स की टीम को। तो उनको अपनी बैटिंग पे यहाँ फोकस करना पड़ेगा। उनकी 30 रन की लीड बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी दूसरी बारी में भी उन्हें बोर्ड के ऊपर, जैसे सादिक मोहम्मद साहब ने बात कही कि एटलीस्ट 80-90 रन स्कोर करने होंगे, तो उस तरह वो 130-120 रन तक पहुंचने में कामयाब होंगे। और जिस तरह की बैटिंग है नॉर्थ नवाब की, ठीक है खुर्रम चकवाल पहली इनिंग में नहीं चले, बिलाल शाह नहीं चले, हाफिज पोला और मियां चुन्नू ने स्कोर किया, लेकिन उनकी बैटिंग में एक डेप्थ मौजूद है जिसका ख्याल करना होगा। और अब वो 2 बैट्समैन पहली इनिंग में ज़बरदस्त बारी ली थी दानियाल ने, वो भी क्रीज पर आ रहे हैं। मिमरान नहीं आए, मिमरान ने भी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की थी। उनके साथ फलक और दानियाल लेफ्टी बैटिंग के लिए आए। और यहाँ पर 2 राइटी कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर रहे हैं हमें, राना अशफाक साहब एंड फरूख। Thank you very much, Naseem Rajput and Sadiq Mohammed. This is the first time that we have watched the team bat first, got a lead, and that's the Johar Jawan, who got all-important lead of 30 runs. Falak and Dania lefty are the true openers. They are going to start the second innings of Johar Jawans, and they are starting with 30 for none. Without a ball being bowled in their second innings. Welcome, Farooq. Thank you very much, Rana Shwak. And Falak, who missed out in the first innings, he went out for naught in the first inning. Now he has come up the order instead of number 3. Certainly he can hit the ball a long way. He saw his colleagues threw their bat to pick up 6s and 4s. Now he wants to join the party. So it's a second innings for Johor, and certainly they will be looking to go after the bowlers right from the word go. Bowler measuring his run-up, in fact.
North Nawabs conceded a lead, although they started well, but at the fag end of their innings they couldn't quite able to score quickly, which cost them a lead of 30 runs. But I still believe they can make a good comeback, not only by bowling well, but their batting got depth as well. And they are, I think, they can chase down even 120, 130 in the next innings. Yes, of course. In this format, in the shortest format, you have to be disciplined as far as line and length is concerned. And if you give away wides and no balls, as you know, a couple of runs are considered as a result of wide. So certainly, as a bowler, you will feel the pressure. Weather is getting better as the time progresses, because when we started this match it was too hot in the middle. First ball of Johar Jawans' second innings, and this has been put away, and put away magnificently over deep backward square leg for a 6. Johar Jawans away with a 6. What a lovely pickup shot, what a perfect start. It was pretty much on the leg side, and he had all the reason to deal with the maximum, and straight away pressure on the bowler. The timing was absolutely exquisite on that occasion. Dania lefty looks in a good touch. Very well bowled by the bowler this time around. Once again try to work towards the onside. The bowler changes end, and it's turned out to be a dot ball in the end. But Dania lefty was superb in the first innings, and in similar fashion he wants to begin the second knock. He started with the maximum, and as far as the fielders are concerned, a deep square leg we have, and also the fielding restrictions hasn't been lifted, so not many protection they have, and they have the fielder at long on. Outside the off stump, he threw his bat at that one. It took an outside edge of his bat and then went towards the third man. Fielder had to do a bit of running to gather that one, and in the process batsman got a single. He's livid with himself, Dania lefty, and he just missed that opportunity with outside the off stump. Tried to work towards the offside as well. In the end, caught 1 run. Every ball is important. Every boundary is so crucial. Indeed it is. You can have only 2 fielders outside the circle in first 2 overs. We have a man at long on, and then we have a man at mid-wicket boundary, or in between square leg and mid-wicket. Apart from those fielders, everyone is inside the circle. This one is played away, and played away magnificently. That wasn't an easy ball to be hit, but he still able to hit that one over the inner fielder who was at mid-wicket, and ball got to the boundary in an eye flash. Lovely shot, lovely pickup shot, the low full toss, and it's worked away very nicely. Got the elevation, and on the first bounce, ball got to the boundary. So some confidence for Falak. He's a fine batter. He's got out for note in the first innings. Nice wrist work from Falak. Now once again he's ready to face the ball. Outside the off stump, banged and banged over extra covers, right out of the middle of the bat. The moment it left the bat, it was quite evident that it would go all the way. What a magnificent shot. And that is why the Falak has been promoted up the order. He missed out in the first innings. He got a boundary and now smashed a magnificent 6. Look at that, outside the off stump, and he had all the reason to free his arms. Superbly played for the maximum here, and what a start for the right-hander. He had all the time in the world to hit that one over to the offside, as which was on offer. Oh, very well bowled, very well bowled. Somehow he manages to block that one into the offside. 17 for none, first over is done. That is
They are leading by 47. Rabada is going to start the second over. I think Rabada has bowled the first over. It's going to be somebody else who's going to start the second over. Daniel has 7, Falak has 10, and Farhad is the one who's going to start the second over. Let's take a look at the field. There is a man back at the deep backward square leg boundary, and there is a man at wide mid-on. These are the two men who are guarding outside the circle, and this is the dugout of Johar Jawans. Syed Nasir, who batted as an opener in the first innings, is waiting in the dugout. Falak was sent up the order as an opener to join Daniel, who is on 7 of 3, Falak 10 of 3, and Farhad with Abdali will start the new over. And batsman has put that away just over the outstretched hands of the fielder at deep backward square leg, and it's carried all the way for 6. Superb shot that is. It was on the pads and beautifully played. And there was a man down there who just stretched his arm, but certainly it didn't matter in the end. He cleared the fence quite comfortably in the end. Look at that shot, full toss in the middle stump, and lovely wrist work come through, and look at that. Good use of the bottom hand as well at the end. And again it's going all the way. Fielder could only be a spectator. Back-to-back 6s. Different length, different shot, but the result is same. So 12 runs of the first 2 balls. As Daniel lefty was superb in the first innings, and started to be dominant in the second innings as well. Look at that. He just kept watching the ball and comfortably cleared the hoardings. Superb piece of batting. That one banged hard into the surface, and that was taken off a little bit. Batsman thought that would have been a wide, but that wasn't the case. In fact, predominantly lefty targeting the leg side and succeeding as well, and runs coming thick and fast. 59 effectively they have, because they got a very important lead of 30 runs on the base of their first innings, and now they are 29 for no loss. Outside the off-stump, he's going across the line, once again targeting the mid-wicket, misses it. A rare dot ball, Rana. It was once again he tried to work towards the onside. He still can't believe it, how he missed that. Yeah, he's in a bit of disarray. How on earth I missed it? He thought he could hit it for a 6. He's been batting well. Farhad Abdali operating from the far end. He's coming left arm over the wicket, and this time he has smashed away over deep backward square leg. Third 6 of the over. It's raining 6s here in Asghar Ali Shah Cricket Stadium, Karachi. So 6 again after a couple of dot balls on a trot, and Daniel this time didn't miss out. He was down on his knee and did everything right. Look at the bat swing, and look at the bat where he finished it, and it was right in his back. So complete swing of the bat. Fourth one, even better and straighter. Over long off she goes. 4 6s have been struck in this over, and what a way to finish it. This is the prettiest, I reckon, and lofted over long on, beautifully played, controlled it to the perfection. Just stand and deliver stuff. Look at that. He gave the photographic pose as well, and certainly he must have enjoyed that. Tremendous piece of hitting, and 2 overs gone, and Johar Jawans on 41 without a wicket, and lead is over 70 now. They've still got 24 deliveries in their second innings, and they've got all the wickets in hand. The 2 men are at the middle, are doing a good job. So it looks like, Farrokh, it's going to be an uphill task for the North Nawabs.
Absolutely, for the way both openers are playing, certainly they are looking dangerous, and they look fancy to get to the massive score in the second innings. And look at this magnificent drone cam shot. Nice batting strip, and now it's where it's getting better. What a beautiful shot. Good camera work. Evening is falling, and this bird is happy as well. And these two are happy too, I reckon. In my opinion, they should be happy. 41 for no loss. 2 overs been done. Third over of the second innings is beginning or resuming. Down the leg side, wicketkeeper did get his hands into that one, but couldn't quite stop it. And 6 wides. 6 wides. Oh dear, oh dear. A terrible start of the new over. Khurram Rabada was pretty much spot on as far as his performance in first innings is concerned, especially his first over in the previous innings. And once again, he's not happy. He's somehow he's complained with the umpire. It should have been not given a wide, but it was down the leg side, and not a good work by the keeper. So score goes to 47 now without a wicket. It can add insult to the injury. This one is driven away. Long off has to run towards his left to cover it, and he does well. Single has been taken. Not the best of timings from Falak. The ball started to be stopped near the boundary, and now they have some protection at the boundary. You can see there's Daniel left is on strike. We have deep mid wicket, deep backward square leg, the fine leg, and one player is at long off. But when he swings his bat, and somehow it doesn't matter if any fielder is stationed at any boundary position. Rabada is slightly under pressure, and some adjustment to the side screen at the moment. Runs seem to have been coming easily at the moment for the Johar Jawans batsmen. North Nawab in a bit of a troublesome situation. There you go, there you go, there you go, another one. Raining sixes. Doesn't matter who is the bowler, doesn't matter which part of the ground it is going, but they are going for sixes. Oh, what a glorious shot, and smash it over extra cover. Look at that, look at the timing. He played that one with absolute grace and class. Man of the moment, Tania lefty, 37 of 10. What a tremendous piece of batting. Once again he has heaved him away, and heaved him away over mid-wicket for 6. 6 is everywhere. Runs are coming at a swift pace, and it doesn't look like that North Nawab can stop them. Certainly he's unstoppable. Rabada hasn't beat great in this innings. He's dropped the ball short, and he's mashed it in style, pulled away beautifully. And before that, he just pitched it up. He got the punishment. He dropped the ball short. He got the punishment. And now Daniel lefty just 7 away from his magnificent half century. Finally, some sigh of a relief for the bowler, because only a leg by is taken this time around. A lot of sixes been hit, and Daniel lefty batted with some venom, batted with some bite in his bat. Scored 43 of just 12 deliveries. And just one noticeable thing is Falak has faced just 4 deliveries and it's smashed 11. So he must be considering himself extremely lucky. He's got the strike back now. And he got a chance to hit few boundaries. He played that one a bit too early. Ball came a bit late and then struck onto his body, and he got a leg by as well. So last 2 deliveries were very good as far as bowling side is concerned. But now Daniel lefty got the strike back, and this will be the last over of the 3rd over. And take a look at the score, 62 for no loss, and effectively they are 92 for no loss. I think they are in a very good position to give them a target of 140, 145 at least, which will be a
very, very difficult task for the North Nawabs. Another good ball. Dot one to end the over. 3 overs have been done and dusted. It's none for 62 Johar Jawans in their second innings. Very expensive figure from Rabada, none for 36. Johar Jawans 62 for none. Falak on 11th. Daniel left in 43. So it has turned out to be an extraordinary partnership between both the openers. So Johar Jawans is 92 runs ahead as far as the lead is concerned. And time for the change in voices. Asif and Nasir Mushtaq are picking up the commentary. Come on, boys. Hello. थैंक यू फ़ारूक एंड राना शवाक। मेरे साथ देने के लिए कॉम बॉक्स में मौजूद हैं इस वक्त के आसिफ। तीन ओवर्स का खेल ख़त्म हो चुका है और जौहर जवान्स ने पहली इनिंग्स में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था। फिर उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और रन ज़्यादा बनाने नहीं दिए बल्कि लीड हासिल कर ली। बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की खसूसियत यह है कि यहाँ पर मैच 2 इनिंग्स का है और इसका क्रेडिट जाता है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर लेजेंड जावेद मियादाद, उनके साथ फॉर्मर कैप्टन हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये सब ब्रेन्स जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। जब ये ब्रेन्स इस लीग के साथ जुड़े हैं तो ये फॉर्मेट सामने आया और ज़बरदस्त फॉर्मेट है। आप पहली इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए और ऊंचा खेले हैं इस दौरान। फील्डर बॉल के नीचे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नीचे आते हुए और बहुत ही शानदार कैच लिया है। वेल जज कैच। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कैच और इसी के साथ ही एक विकेट का और नुकसान हो चुका है इस वक्त जौहर जवान्स को। जी हाँ, इस दफ़ा जितनी भी दाद दी जाए कम है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह फील्डर ने इसको जज किया, प्रॉपर नीचे आए और कोई गलती नहीं की। इस तरह के कैचेस अमूमी तौर पर मुश्किल होते हैं जब लॉन्ग चेज होता है फील्डर के लिए। सो एक और नुकसान उठाना पड़ा यहाँ जौहर जवान्स को। नाज़रा, मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तानी लेजेंड्स इस लीग के साथ जुड़े, इसका फॉर्मेट बनाया गया। आप पहली इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए, डज़ नॉट मैटर। और हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स की क्रिकेट देखी है, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। जी हाँ, इसी वजह से इसमें काफ़ी अट्रैक्शन पैदा हुआ है और लोगों की इंटेंशंस जो हैं वो डाइवर्ट हुई हैं टुवर्ड्स टेप बॉल और एक मरतबा से फिर दोबारा से रिवाइव हुआ है। वैसे तो खैर खेलते हैं गली कूचों में बच्चे, लेकिन ग्राउंड के अंदर आके और फिर यहाँ पर स्लॉपी फील्डिंग, फील्डर प्रॉपर्ली इसको कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन्स यहाँ पर मजीद मिल गए जौहर जवान्स को। जी हाँ, थोड़ा सा फंबल हुआ इस फील्डिंग में, वरना रोक सकते थे। रन्स थोड़े से कम देंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा। तो मैं ये कह रही थी, जब आपको एक ट्रांसमिशन भी मिल रही हो, किसी चैनल के थ्रू आप जा रहे हैं, आपकी रिकग्निशन हो जाती है फिर। जी हाँ, तो ये देखिए फील्डर इसको कलेक्ट नहीं कर पाए थे। अब इन फील्डर्स को जान मारनी होगी, रन्स बचाने होंगे यहाँ पर। और डाउन द लेग साइड देखना है और एक अच्छी गेंद। टेप बॉल क्रिकेट में बैटर्स जो हैं वो बॉल को चेक करते हैं आफ्टर 1-2 डिलीवरीज। और बॉल कर दिया यहाँ पर यॉर्कर लेंथ डिलीवरी अक्रॉस द लाइन, इसको खेले और लाइन मिस कर गए। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। जी हाँ, दूसरे विकेट का खसारा इस जौहर जवान्स को। थोड़ा सा अंडर प्रेशर डेफिनेटली आए होंगे कि एक के बाद दूसरे विकेट, और जब आपकी विकेट्स गिरती हैं तो फिर ज़रा प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और यही किया है नॉर्थ नवाब्स ने जौहर जवान के साथ। एक अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए नॉर्थ नवाब्स वापस गेम में आ रहे हैं।
जी हाँ, अब नॉर्थ नवाब को रन्स रोकने होंगे, लीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और नॉर्थ नवाब के कैप्टन खुर्रम चकवाल, जिनको किंग ऑफ एशिया कहा जाता है टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं, उनसे बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन आज पहली गेंद पर पहली इनिंग में आउट हो गए। अब मौका होगा दूसरी इनिंग्स में कि वो कुछ स्पेशल करें अपनी टीम के लिए। एग्जैक्टली यही फ़ायदा है इस गेम का, इस फॉर्मेट का। और अभी आप जिक्र कर रहे थे लेजेंड्स का, जिन्होंने ये फॉर्मेट जो है उसकी फॉर्मेशन की है, इस पूरे उसकी KTPL की, तो बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनको चांसेस मिलेंगे और वो खेलेंगे किस तरह से। और हो सकता है यही फॉर्मेट पे फॉलो करें जो आपकी अमूमन जो रोड्स पे खेलते हैं बच्चे, टीवी पे देख के बहुत फ़र्क पड़ता है इन तमाम चीज़ों का। फुल टॉस डिलीवरी और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, ऑफ द मार्क विद द सिंगल। स्ट्राइक पर मिमरान है और मिमरान पहली इनिंग्स में जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था। मिमरान इसको ऊंचा खेले हैं मिड विकेट की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और एक और शानदार कैच। इस दफा भी कोई गलती नहीं की फील्डर ने और मिमरान को जाना होगा डग आउट में। बहुत ही आला फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त नॉर्थ नवाब्स, और ये तीसरी विकेट जो है सो गिर चुकी है और पवेलियन की जानिब लौट चुके हैं। सैयद नासिर हैं और मिमरान उनके साथ दे रहे थे। जौहर जवान्स ने गो के फर्स्ट इनिंग में बेहतर कारकर्दगी की, लेकिन इस वक्त जो सेकेंड इनिंग है उसमें थोड़ा सा उनको क्रूशल टाइम मिल रहा है। काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं नॉर्थ नवाब्स थ्रू देयर फील्डिंग। नए आने वाले बैटर इस वक्त ग्राउंड में आ चुके हैं और वार्म अप होते हुए एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस ये कर रहे थे कि जब भी आप शॉर्ट पिच डिलीवरी करेंगे टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बैटर्स ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं कि आप उनको लेंथ डिलीवरी करें या और वो उसके लिए तैयार होते हैं इसको हिट करने के लिए। हमने देखा अभी जिस तरह से मिमरान आउट हुए शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर, और इस तरह अब नॉर्थ नवाब की पूरी कोशिश है। आसिफ बॉलर हैं और आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आसिफ नाम के जो लोग होते हैं बहुत कमाल करते हैं। बड़े ही खूबसूरती से आपने इनडायरेक्टली अपनी तारीफ की है। नो डाउट आसिफ नाम बहुत अच्छा है, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। बहुत अच्छी गेंद और ये वो लेंथ है कि यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, और इसको बैटर सही तरीके से खेल नहीं पाए और क्रेडिट देना होगा आसिफ को आपको। ये देखिए ज़बरदस्त बॉलिंग और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सैयद नासिर जो कि कैप्टन हैं, यहाँ पर तारीफ करना होगी आसिफ की, अब तक अच्छा आगाज किया है। थोड़ा सा विविड हो गया आसिफ, काफ़ी बाहर निकलता हुआ गेंद था। इसके साथ ही वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से 2 रन का इजाफा हुआ जाता है। लीड हासिल है इस वक्त जौहर जवान्स को 97 रन्स की, यानी कि 97 रन्स की लीड हासिल है। करंट रन रेट 16.34। आसिफ ने 2 गेंदें अब तक करवाई हैं। इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं कवर रीजन्स में, फील्डर ने इस दफा गलती कर दी, प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं आए। एक और जबरदस्त कैच हो सकता था। आसिफ बिल्कुल खुश नहीं है और यकीनी तौर पर ये कैच लिया जाता तो जौहर जवान्स के लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बॉल करवाई बहुत ही ज़्यादा नापी तुली इनकी गेंद थी, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल प्रॉपर था, लेकिन फील्डर ने मिस फील्ड जो किया।
ये देखें ड्रॉप कर दिया है, एंगल थोड़ा सा फील्डर का चेंज था, थोड़ा सा अगर एंगल अपना सही करते तो। और इस दफा प्रॉपर कनेक्ट किया है इसको, ये गेंद जाएगी नॉर्थ नाजमाबाद से साउथ नाजमाबाद की जानिब, शानदार कड़ाकेदार छक्का। सैयद नासिर कैप्टन हैं और इस वक्त ताबड़तोड़ हमले आसिफ के ऊपर हो रहे हैं। नासिर नॉट आउट है, 9 रन बनाए, अब तक 4 गेंदों का सामना किया है। लीड 100 रन से ज्यादा, 105 रन की लीड हो चुकी है। इस दफा कदरे बेहतर डिलीवरी, 1 रन बन पाएगा, लॉन्ग ऑन की जानिब खेले थे। आज नॉर्थ नवाब ने टॉस जीता, उनके कैप्टन खुर्रम चकवाल, जिनको टेप बॉल क्रिकेट में किंग ऑफ एशिया कहा जाता है, पहली दफ़ा कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हैं और बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इस दफ़ा इसको ज़ोरदार तरीके से मिड विकेट रीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है वो प्रॉपरली उनका बैट पर नहीं आया और वहीं पर रुक गया, जिसकी वजह से रन का इजाफा नहीं हो सका। अच्छी गेंद करवाते हुए नजर आ रहे हैं आसिफ। आखिरी गेंद 5वें ओवर की और एक और बहुत ही उम्दा गेंद आसिफ की, और यही उनके कैप्टन खुर्रम चकवाल उनसे चाहते थे। इस तरह अब 5 ओवर्स का अख्ताम हो चुका है और लीड जो है वो 106 रन हैं, 76 रन अब तक बनाए हैं और कदरे बेहतर बॉलिंग की है पहली इनिंग्स के मुकाबले में। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस क्रिकेट को एंजॉय करते हुए, बड़ी बात है कि इतनी शदीद गर्मी में भी बच्चे उतना एंजॉय कर रहे हैं। आप ये सोचें कि क्रिकेट एशियन ब्लड के अंदर मौजूद है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं देखते। ये डग आउट का मंजर जौहर जवान्स का। ज़बीउल्लाह ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, 3 रन देकर 3 विकेट हासिल की थी अपने पहले ओवर में और आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। अब यह है कटी पहाड़ी का मंजर, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चे खेल कूद में मसरूफ़। नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये एक लैंडमार्क है और एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, रन आउट हो सकते हैं यहाँ पर और अंपायर ने रेफर किया है थर्ड अंपायर की जानिब। जिस तरह से जुबिलेशंस हैं और खिलाड़ी इस बात पर मुतमईन हैं कि ये आउट होगा। और जिस तरह से सो बैटर ने चलना शुरू कर दिया है वापस पवेलियन की जानिब, तो उनको खुद भी अंदाज़ा है कि मैं रन आउट हूँ, वरना समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सा बेईमानी करते हुए रुक भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने ईमानदारी का मुजाहरा किया और इनको पता है कि मैं आउट हो गया, इसलिए ये वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, और क्रिकेट जो है वो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है और जिस तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है और रन आउट हो गए। सैयद नासिर इस वक्त रुक चुके हैं, देखते हैं कि आए इधर वो थर्ड अंपायर के फैसले का इंतज़ार करते हैं। ये देख सकते हैं आप विकेट कीपर हाफिज पोला, और पोला ने पॉलिसी थ्रो की और ये डायरेक्ट हिट थी। डायरेक्ट हिट हमेशा नुकसानदेह होती है बैटिंग साइड के लिए, क्योंकि उसमें ओवर थ्रो का भी खदशा होता है, उससे मज़ीद 1 रन मिल सकता है या 2 रन भी मिल सकते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है। तो थ्रो जो है वो डायरेक्ट विकेट्स में जानी चाहिए, या तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो।
वरना पास ऑन कर किया जा सकता है। और आउटसाइड एज हुआ है, बॉल जाएगी सेटमैन रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। इस बॉल को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे बैटर। बदर एक्सपो प्रेजेंट्स कराची टेबल प्रीमियर लीग, ये सेकंड एडिशन है और इस एडिशन की खास बात कि इसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को मुंतखब किया गया है और ड्राफ्टिंग सेरेमनी हुई थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ियों में हिस्सा लिया और इसमें तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, फहद मियां चन्नू और इस दफ़ा इसको खेले फाइन लेग की जानिब, एक और शानदार छक्का। और यूं जौहर जवान्स अपनी लीड में इजाफा करते हुए ग्राउंड में मौजूद हैं जुनेद और अब्दुल। जुनेद का ये पहला छक्का और इन्होंने अपने जो रन्स का खाता है वो खोल दिया है। 4 गेंदों का सामना किया था लेकिन एक गेंद पे इन्होंने सिक्सर मारा है। जी हाँ, अब लीड जो है वो 114 रन्स की हो चुकी है, अभी 3 गेंदों का खेल बाकी है। ज़बीउल्लाह, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, हल्का सा चेंज ऑफ पेस और इसको लेग कटर्स कहते हैं, स्लो डिलीवरी विद द लेग कटर। तो आपको इस वक्त फुल मार्क्स देने होंगे ज़बीउल्लाह को। अब तक 3 विकेट्स हासिल की हैं, 10 रन्स दिए हैं, 15.5 की औसत से अब तक बैटिंग की है जौहर जवान्स ने। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, यॉर्कर लेंथ, डिलीवरी और डेथ ओवर्स में जब ब्लॉक होल को हिट किया जाता है तो बैटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, ज़बीउल्लाह जिनकी बहुत ही लीथल बॉलिंग अटैक है। फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से उन्होंने 3 रन्स देके 3 विकेट्स हासिल की थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कारकर्दगी थी इनकी। और एक और बहुत अच्छी गेंद और ऐसा लगता है कि ज़बीउल्लाह अंपायर के फैसले से खुश नहीं है। ज़बीउल्लाह जो इस वक्त भी अफसरदा खड़े हैं, यही क्रिकेट आपको सिखाती है, इट्स अ जेंटलमैन गेम। आपको सीखना है कि आपको हर हाल में अंपायर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। इट्स अ टफ लक। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, अब तक सिर्फ एक बाउंड्री कंसीड की है इस ओवर में। अब आखिरी गेंद अब्दुल सामना करेंगे ज़बीउल्लाह का। 117 रन की लीड हो चुकी है अब तक और बहुत ही अच्छी गेंद इस दफ़ा आउटसाइड द ऑफ स्टंप टारगेट किया और इस दफ़ा अपने टारगेट पर पूरा उतरे। इस तरह शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। सो अब 118 रन्स चाहिए ये मैच जीतने के लिए नॉर्थ नवाब को। और याद रहे नॉर्थ नवाब के पास खुर्रम चकवाल, फहद मियां चुन्नू, हाफिज पोला जैसे बेहतरीन बैटर्स मौजूद हैं। और जौहर जवान्स ने इस इनिंग में 87 रन स्कोर किए हैं। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6 ओवर्स मुकम्मल हुए। जुनेद 6 रन बना पाए हैं। अब्दुल ने 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन स्कोर किया। ये आप देख सकते हैं बैटिंग का, दानियाल ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था। 45 रन स्कोर किए थे 16 गेंदों पर और उसके बाद कोई भी बैटर कोई खातिर खा इजाफा नहीं कर सका। फलक और नासिर ने बिलतरतीब 11 और 10 रन बनाए। जुनेद और असलम नॉट आउट रहे। इस तरह 87 पर 4 और एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा हैं, 14 रन एक्स्ट्रास के दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रबादा जिन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की, 36 रन दिए हैं। फरहाद ने 24 रन दिए। ज़बीउल्लाह इस वक्त आपको दिमाग रहे 13 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आसिफ ने 11 रन दिए हैं और कोई भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे।
ये इनिंग की हाईलाइट हम अब देखते हैं कि ये ज़बरदस्त आगाज़ किया था दानियाल लेफ्टी ने, बुलंदोबाला छक्के लगाए थे और कुछ बेहतरीन ग्राउंड शॉट्स भी देखने को मिली थी। इस दफ़ा इसको ओवर एक्स्ट्रा कवर खेले थे, शानदार छक्का। और दानियाल लेफ्टी की जो बैक लिफ्ट है बहुत ही ख़तरनाक है, ये देखिए। और ये ज़बरदस्त एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का लगाया था। तो इनकी बैटिंग में क्लास देखने को मिल रही थी और हज़रतुल्लाह ज़ज़ई की बैटिंग याद आ रही थी, एक ज़बरदस्त 50 स्कोर की। और ये यहाँ पर आउट हो गए थे, एक शानदार कैच लिया था, ये बोल्ड कर दिया था दानियाल लेफ्टी को। और कुछ अच्छे कैचेस भी हमें देखने को मिले, वेल जज कैचेस यहाँ पर। और ये आसिफ की इस गेंद को ओवर लॉन्ग ऑफ खेले थे और ये फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का लगाया था। अब जौहर जवान्स ने 118 रन्स का 118 रन्स का टारगेट है। और नादरा इस मैच के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से नॉर्थ नवाब ने जब टॉस जीता था और ये फैसला किया था कि पहले बॉलिंग करनी है, तो अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त उनकी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग रही। जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा बड़ा टारगेट दिया है इन्होंने। तो अब देखना यह है कि किस तरह से उसको ये पूरा कर पाते हैं इस हदफ को, क्योंकि इतना क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, आपको मैक्सिमम शॉट्स लगाने होंगे ताकि आप जल्दी जल्दी उसको रिड्यूस करें, जो आपके ऊपर एक बर्डन समझ में आएगा। और अगर अर्ली विकेट्स ले लेते हैं, जल्दी विकेट्स, तो फिर तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि एक अच्छी खासी इन्होंने जो है वो लीड हासिल की हुई है। बिल्कुल ठीक। और ये दो बेहतरीन बैटर्स खुर्रम चकवाल और फहद मियां चन्नू इस वक्त एंटर हो चुके हैं। 118 रन्स का हदफ हासिल करना है और इस वक्त अब कॉम बॉक्स में तब्दीली का वक्त है। यहाँ पर फ़ारूक रियाज और उनके साथ होंगे राना इशफाक। Thank you, K. Asif and Nadra Mushtaq. Openers are already in to start their second innings. 118 is the target. I think they bowled really well at the fag end of their innings. Fahad Mian Chunnu was a fantastic hitter of the ball and can have a go at the ballers right from the words go, right from the beginning. North Nawabs made a good comeback, although they gave away 46 runs in first 2 overs of the second innings. Khurram Chakwal, the captain himself, is along with Fahad Mian Chunnu, although he got a duck in the first innings, but he can be lethal in second time around. First ball and very well bowled again. Good start by the Johar Jawan and welcome Farooq. Thank you very much, Rana Shwak. The fourth and final innings of this contest. We have Super Sunday today, triple header are scheduled, and 118 is the target. Fahad, the opening batsman, along with Khurram Chakwal. Target is 118. Is quite gettable on this wicket and is in this ground. Certainly, we might have a cliffhanger here. Yes, it is gettable, particularly when you conceded the lead of 30 runs, and this one is punished and punished brutally with brutality over covers for a 6. Bad delivery outside the off stump, full toss and friendly stuff, and he had all the reason to dispatch it away for 6. A flat shot. It must have given him a lot of confidence. Shehzad wasn't up to the mark. It was outside the off stump, and Fahad had no trouble at all to get off the mark. He struck that one relentlessly. There wasn't any mercy on bowler that time around. And this one is driven away onto the onside. Fielder covers a bit of territory to get to the ball, and that was a very good throw. It hits the base of the stumps
but I think the batsman was well home. He got himself back into his respective crease, but that could have been dangerous. Absolutely. Fahad almost run out for being overconfident. I think throw almost a perfect one. Look at that siren angle, and he wasn't comfortably in. He could have been out. So nevertheless, he survived, but nevertheless it was a good throw as well from the deep. Almost he smashed the stump. He had one stump to aim at. Now Fahad is off strike. Khurram Chakwal is a man. He has to face his first delivery. And Khurram Chakwal has pulled that away. But there is a man back there right at the boundary. Khurram Chakwal gets off the mark with a single. And this is his first run in KTPL edition 2. And now Fahad Mia Chunnu got the strike back. Is you have to have good fielders around. Because good fielding can lift the bowling side, can lift the bowler, can lift the captain, and can make the tempo and can set the tone. Absolutely. As Fahad on strike, Khurram just missed the opportunity the last ball. It's the first delivery. The bowler got away with that. It was short, but he just conceded a one. This one is hit away, and fielder is there who has caught that one very cleanly. He kept his cool, did bit of running, but did it beautifully, and the first wicket is fallen. Just for a second I thought he had cleared the boundary. He struck it well. There was sweet sound of the bat. He's got a lot of wide, but certainly not enough length. He's absolutely livid with himself. Fahad, he lost the opportunity. He just stayed for 3 balls, a full toss, friendly stuff. He flicked the ball well, but certainly not enough power he generated. In the end, a good take. A good take by Saif. He's pumped, and Fahad Mia Chunnu is on his way for 7. And 8 for 1. Hafiz Pola is the newcomer. Batted well in the first innings. Shehzad got a wicket. Oh, short and rising ball. And bowler enjoyed it. Batsman, I think, didn't know much about that one. The first over is bowled, 8 for 1. Not a bad start from Johar Jawans, just 8 conceded. And in the beginning, 118 required. Now they're 110 runs away from the victory. And in that context, it's a pretty good over. Required run rate has climbed up to 12. It is creeping up all the time. And it can cause some problems because first over was an economical one. 8 or 12 runs, I think, should be called a good over in 6 overs. Faisal Athar is down there, played one-day cricket for Pakistan. And he's also a part of this KTPL, Karachi Tape Ball Premier League 2nd edition. Oh, look at their passion. They are playing in the nets, doing some nets. Not only they enjoy by watching this KTPL, but they also enjoy by playing here. Back live. Oh, wow. Outside the off stump. Didn't really able to time it, but still got a boundary. He hasn't found the middle of the bat so far as we're outside the off stump. He tried his best to get the distance over the boundary. As Khurram Chakwal tried to work it away with a lot of power, but in the end, he got a boundary. So they have to make most of this opportunity. After this over, the field restrictions will be lifted. Yeah, his feet were not moving on previous occasion. Bat was going forward, but still picked up a boundary. And that's what matters. A.B. Salam is operating. Outside the off stump, umpire stretched his arms. It means a couple of runs in terms of wide.
wide gifted in form of 2 runs. It's outside the off stump. And Khurram Chakwal is a dangerous customer, but he seems to be struggling at the moment as far as finding the middle part of the bat is concerned. He has to make every opportunity count. That the target is somehow can be daunting at any given time. He's a very fine player. Looks in a bit of spot of bother in this match though. Once again did not able to play it away. Another dot ball. So Khurram Chakwal seems to be struggling a little bit. It's a slow one. Look at that. It's a brave move and well foxed by AB Salam. He was not even close to make any contact. He just got a blow on his face, I reckon. But nevertheless, in the end, it was a precious dot ball. It was a dangerous move. It's a valiant move. It's a slow bouncer. He could have struck anywhere. But in the end, it was too good for Khurram Chakwal. He missed it altogether. So it's a dot ball. On 5, Khurram Chakwal. Finally, he's going to go to the non-striking end. So Khurram Chakwal is struggling at the moment, not finding the middle of the bat. And I think this is a very good opportunity for the fielding side to have some dots in, or they also can get him out. But at the moment, I think it is better for them to have him in the middle, because he's playing dot ball, 6 or 4 balls. Usually we expect 15-16 runs from him in 4 balls. Certainly, they want to drive the runs rather than to pick up wickets on regular basis. And Khurram Chakwal's score is 6 of 4. Obviously, it's not a great start from any stretch of imagination. But Hafiz Pola has just faced one delivery. He has to throw his bat. He certainly must be feeling under pressure. He has to swing his bat for the good effect. Outside the off stump, wide, called by the umpire. Couple of very valuable runs. Every run does count because they're looking to get 118 for the victory, and they already have faced 9 deliveries out of their 36 deliveries and scored only 7. Oh, look at that heave. Zian is his name, and he wanted to hit that one downtown. It didn't really get connected. A little child. Back live in the middle of Asghar Ali Shah Cricket Stadium. Hafiz Pola is taking strike against AB Salam, who has bowled 3 deliveries and conceded 9 runs. Still looking to get his first wicket. Outside the off stump, second consecutive wides. These wides could be lethal and could be costly for the fielding side. They got to be accurate as far as line and length is concerned. Obviously, they are losing advantage. They drive up the runs a little bit. Now, back-to-back wides, the 4 extra runs conceded without a ball being registered. And now required rate is has gone down to 22 now. And they need less than 100. So they need to be pretty accurate. Now, change of side over the wicket, AB Salam. This time around, he has hit it in the air. True fielder converting it. Oh, no one could able to get under the ball. That had to be taken at any cost because they had all the time in the world to come under the ball, and a couple of fielders, in fact 3 fielders, was stood there and nobody could catch it. 3 men converged for 1 catch. In the end, it turned out to be 2 fielders, so it was already a tough chance. Any high catch is a difficult one, but when you know someone is coming around from somebody, and to hold a catch, so in the end, it turned out to be extremely difficult one. So nobody made any contact with the ball, but the positive aspect is just a single conceded. Couple of runs, single I think he got, or maybe 2. That was a very, very bad way from the fielders to catch it. But bowler is bowling beautifully at the moment. Runs are very hard to come by. Both batsmen struggling. They are making the bowler making life difficult for the batters.
Apart from 3 wides, he has been spot on as far as line is concerned, as far as the result is concerned. He also created the catching opportunity. The high catch missed by their colleagues. All the high catches are always difficult, and the calling has to be super clear as far as who wants to go for the catch. But at the moment, it's 1 ball to go in this over. Khurram Chakwal struggling. Hafiz Pola is also run a ball 3 of 3. And required rate is creeping up now. It's a fraction over 23 runs per over. Difficult task by all means, but cricket is a funny game. Couple of big overs can get them right back into this game, and these two are capable to get the big overs in. Down the leg side again. AB Salam worked really hard, but at the same time he bowled 3 wides ball in this over, which means, in fact 4, which means he gave away 8 runs, and it's a 10 balls over, which hasn't finished yet. And who knows, he can bowl few more wides balls, and over can be stretched to the 12 or 13 balls. This is not on, but he's lucky enough, or credit has to be given to him, that he hasn't provided too much width or too much room for the batters to hit him away. Again outside the off stump, wicketkeeper could not able to gather it properly, but it didn't go far away. Finally, second over is completed. It's 24 for 1. Yes, 10 balls over, 4 wides he gave it, and a lot of effort he had to put AB Salam. The overall bowling figures is not that bad, none for 16, but required rate is creeping up, is 23.5 runs per over from here. So 94 runs away, North Nawab. They have lost a wicket, but the current batsmen haven't been lethal at the moment. They have to take on the Johar Jawan bowlers nevertheless, and one thing, sigh for relief for Johar Jawan, the field restrictions will be lifted from now. 94 runs to be scored in 24 deliveries. Required run rate is 23.5 per over. Outside the off stump again through Kitchen Singh's at that. Didn't make any contact, almost cropped at that one. He was scropping in the darkness. Didn't make any contact. This is good bowling, and this is not a good batting. Not at all. What is Nadra Mushtaq pondering? Oh, she's pondering hard. She's pondering hard. She's waiting for her turn, I guess, in the com box. Yeah. He has hit it straight to the man at long on. Poor batting, and a struggling knock is over finally. And important factor is it's a dot ball, as another batsman who was struggling out there as Hafiz Pola made a good connection, but it turned out to be a loose shot in the end. He didn't get the distance, he didn't get the height. It turned out to be a catching practice. Not much power behind the shot, and comfortably taken it long on. So things are getting better and better for Johar Jawans, and wicket number 2 down. Hafiz Pola goes for 3. And it's 24 for 2. This has been a terrific comeback by Johar Jawans. They bowled extremely well. Shafiullah Agha is making his way out in the center, and his job is very simple, and that is to play some strokes. Obviously they have to hit out on every ball. They don't have much balls left. They are appealing, not quite sure what they are appealing for. Batsman asking for the wide, and bowler and keeper asking for the wicket, and finally batsman got his wish. Umpire called it a wide. Couple of more runs for the batting side, so they are now requiring 92 for the victory.
in 22 deliveries. That was the last one. Batsman went for the hook. Bowler and keeper appealed for the caught behind. Batsman asked for the wide, and batsman got the decision in his favour. It is coming down towards the commentary box and dropped just in front of our commentary box. A much needed six. That's a good hit. Well played. Finally, Khurram Chakwal made a decent connection. He went towards the cow corner, the full toss, and nicely played. He just smashed it over the boundary hole range for sixes. Maybe too late, or maybe they need, maybe they will go for a few more blows like that. Khurram Chakwal is out there. He's certainly capable, but he has to place a miraculous innings from here. 86 in 21 deliveries. Still gettable, still on. You can have big overs like 33, 36 in tape ball consistently. So you can never say you are out of the game, particularly when Khurram Chakwal is at the middle. Once again miscued it, mistimed it. That would have been hit somewhere over long off, but he only able to get a single. So Khurram Chakwal is struggling. A little while ago we watched Nadra Mushtaq on our screen. She was I said what she was pondering, but now I have realized that she wants tea. She's feeling a bit tiredness. Just after one spell of commentary. She has done a lot of spells of commentary today. Today she has done only one. This is in the air. Fielder is placing himself and caught that one quite easily. So wickets are falling like a 9 pins at the moment for North Nawabs. So Shafiullah is gone. Shafiullah just came and went. He goes for note. He went for the big shot. It's almost a nothing shot in the end. He had to throw his bat. So pressure is mounting on North Nawab. So it has also turned out to be a very good over. Nothing short at the end. Just sliced it away and comfortably taken. So it's turning out to be a good over. 3 for 17. Shehzad has ducked for Shafiullah. It's 33 for 3. North Nawab. Great piece of bowling from Shehzad. Picked up 3 wickets for just 17. North Nawabs looking down the barrel at the moment. Runs are not coming, wickets are falling. This time he pulled it straight to the hands of the fielder, who was standing just behind the square leg umpire. Another wicket falls. Wickets are falling regularly. He's on a hat trick now. I guess Shehzad is having a wonderful time out there. He picked up 2 wickets. Now Khurram Chakwal, who was possibly the last hope for North Nawabs, is absolutely dejected with himself. Just half-hearted pull shot and he's straight to the man at a short fine leg, and he's absolutely delighted with that. So 33 for 4 is terrible figures if you are a fan of North Nawab. Khurram Chakwal goes for 13. 33 for 4. That was in the line of the off stump, and he swiveled on his one leg. Tried to get a boundary onto the onside, but he lobbed a catch. Yahya Khan is the new batsman. It looks a very hard job for the North Nawabs at the moment. And look at the size of this bat. These are big bats. Big broad bats they have, tray ball cricketers. That's why they hit the ball miles. Look at the size of this bat. How broad it is. My word.
Bilal, Shah and Yahya, two fresh batters out there in the middle. Their side is in trouble for sure. AB Salam will start as over number 2. He was slightly indisciplined as far as his bowling line is concerned. He considered 4 wides. Swing and a miss, and the fumble by the keeper. Somehow the 1 run picked up. Every ball counts, every opportunity is vital. Bye given. Johar Jawans performed like Jawans today. In first innings, they got a lead. Then they bowled well. And then they again batted well. And in the second innings, they're bowling absolutely on target. So Yahya will face his first delivery. Long on, long off, deep mid-wicket play, deep square leg as well. Big shot to the onside and it's cleared the boundary by a long way. Superb start by Yahya. Short pitch tough and he smacked it away for the maximum. And they need to keep on hitting sixes like this if they want to stay in the game. Otherwise, they would be left behind. Because 78 required of 16 balls. Floodlights switching on. And look at that. Very soon they will be in full effect. And Yahya has to make some impact here. Will he be effective enough tonight to win the game for his side? 78 runs away. His side is AB Salam. Is none for 22. Required rate is just under 30. So certainly a lot of pressure on the batting side. Big shot again. Is it long enough? Yes. Don't worry about the distance. Yahya has got back-to-back maximum here. Still in the game. Still possible. 72 in 15 balls, which means they got to hit 12 sixes out of 15 balls. And wides and nose can help them. That was one hell of a shot. He hit that one miles. And Jaya Khan is doing a terrific job. He looks in a good touch. Why he wasn't sent earlier? Yeah, he looks in good form. A back-to-back maximum, 12 of 2, strike rate of 600 straight away. Round the wicket now, AB Salam. Big shot again. 6 number 3. Tremendous hitting from Yahya. He's unstoppable here. And a required rate is going down now. Keep on hitting those sixes. Keep on hitting those sixes. 3 sixes in a row and suddenly you can feel that they are still in it. Outside the off-stump, look at the power that he generated to hit that one. Camped on the back foot, then gave it a go. That was a tremendous shot. He's a powerful unit, looks like. Although got a slim body, but generating a lot of power behind his strokes. Look at his eyes, he looks so focused. Big shot, has he got a fair enough connection? Yes, once again. 4 balls, 4 sixes. Yahya Khan is playing a miraculous innings here. What a start. He faced his first ball, he smashed the maximum. And now 24 he got of 4 deliveries. What a batting performance. Off the back foot, short pitch stuff, beautifully played. That's what I was saying, that you can have overs of 30s and 35, even 36 in tape ball. And we've already have seen 4 sixes in this over with a ball to go. If we can able to hit a 6 on this one, then 54 gettable in 12 balls. What a nightmare for the bowler. Outside edge and beats the keeper, beat the fielder. That goes for 4. So somehow it's not a 6, it's a boundary. It's 28 runs off the over. Yahya keeping their hopes alive and keeping them in the match. They are still staying in this match. 56 to be scored in 12 balls. And look at that. I love these guys. They are really enjoying and making the crowd to enjoy. 62 for 4 after 4 overs. 56 to be made in 12 balls. 29 runs off the last over. 62 for 4. 56 runs away, North Nawabs. And still, now I can say after tremendous blows from Yahya, it could be anybody's game. Yes, it is, Farooq. It could be anybody's game because Yahya can win this match for them. तो 4 ओवर का खेल पूरा हो गया है और 62 रन
पे 4 खिलाड़ी आउट हैं और नादरा मुश्ताक ने मुझे ज्वाइन किया। नादरा मुश्ताक पिछले ओवर से 28 रन आए हैं, अगर 28-28 के 2 ओवर और आ जाएं तो रन्स बन जाएंगे। हाँ, बन तो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर जिस तरह से बॉलिंग अगर उन्होंने की है वही बॉलिंग होती रही तो डेफिनेटली शॉट्स लगेंगे और गेम हो सकता है, अचीव कर सकते हैं टारगेट को, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क़ब्ल वक्त है। बिल्कुल, क्रिकेट वैसे ही फ़नी गेम है और यहाँ पर तो देखें ना कि 28 रन बन जाते हैं, 36 बन जाते हैं, वो कि इंटरनेशनली टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और 20 में भी बनते हैं बड़े बड़े रन, मगर यहाँ ज़्यादा परमानेंटली बनते हैं। ऑन साइड में खेले, 1 रन बनेगा, इनसे काम अब चलेगा नहीं और मेरा ख्याल है कि बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना ही पड़ेगा और याया इज़ द बेस्ट वन टू गो फॉर द बिग स्ट्रोक्स। जी हाँ, बिल्कुल, याह्या बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से जहांगीर ने कल भी जो इनिंग खेली थी, रात में जिस तरह इन्होंने बॉलिंग करवाई थी, आज भी अगर उसी तरह की, ये देखें यहाँ पर भी 1 रन हासिल हुआ है नॉर्थ नवाब्स को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जहांगीर। अब देखिए 10 गेंदों पे 54 रन चाहिए, इसका मतलब ये है कि 9 छक्के मारने पड़ेंगे 10 में से, सिर्फ 1 गेंद का इनके पास मार्जिन है, विच इज़ इम्पॉसिबल आई गेस। कब इतना इजी नहीं होगा, बहुत मुश्किल कि आपको। और अब 9 गेंदों पे 9 छक्के, अब तो कोई मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं, बस हर छक्के के बाद ये होगा कि एक और मारें और आखिर तक मारते रहें। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन लग रहा है कि इसमें उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस तरह से आपके 1 डॉट होने से इनकी उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, फिर वाइड और 9 के बारे में दुआ करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बॉलिंग जहांगीर की जानिब से, बहुत उम्दा बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त जहांगीर, और यकीनन ये मैच फंसाने में बड़े कारगर साबित होंगे। वाइड की तवक्को कर रहे हैं बिलाल शाह और 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया, मगर अंपायर ने कहा भैया आपके हाथ में बैट है, बैट से कुछ कीजिए। 8 गेंदें 54 रन, अब बाउंड्री को 6 रन से बढ़ाकर कुछ किया जाए तो इनकी उम्मीदें कायम रहेंगी, या फिर बॉलिंग साइड तो आतर के साथ कुछ वाइड्स और नोज करे। बहरहाल वेल डन जौहर जवान्स, और ये ज़ोरदार शॉट, लगता है कि मुझे सुना बिलाल शाह ने और कहा कि राना अशफाक जी हाँ मेरे पास बैट है। अब मेरे ख्याल से बिलाल शाह इसी गेंद का इंतज़ार कर रहे थे कि एक अच्छी गेंद उनको मिले और जिस पे वो चौका या छक्का जो है वो लगा दें और स्कोर में थोड़ा सा इजाफा करें। ये देखें, भरपूर शॉट लगाया है 6 रन्स के लिए। अच्छा शॉट, इस बार चौका होगा फाइन लेग की जानिब, डी फाइन लेग पे कोई भी नहीं, और इस तरह 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 74 पे 4। आखिरी ओवर में 48 रन चाहिए, ये वो 48 रन हैं जो एक दफ़ा इमरान नज़ीर ने हांगकॉन्ग में जो सुपर सिक्सेस होते थे, शायद 44 उन्होंने दे दिए थे। जी हाँ, बहरहाल क्रिकेट है, एक तरह से अगर हम बहुत सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाएं तो ये कहें कि 2 नो बॉल्स हों, दोनों पे छक्के लगें और फ्री हिट पे भी छक्के लगें तो ओवर में 54-60 रन भी बन सकते हैं। जी हाँ, और आपको ये भी याद होगा कि एक मरतबा एक गेंद पे भी 200 प्लस रन हो गए थे। बहुत 80s की बात है, आई गेस 1886 की। 286 जी 286 जो दरख्त के अंदर फंस गया था गेंद और वो दौड़ते रहे थे। ये मेलबर्न का कोई मुकाबला था, एग्जैक्टली 1895 या 94 आई थिंक, और उसमें कोई साहब जो थे वो अपने घर से फिर वो लेके आए गन, वो गन से उसको शूट किया गया गेंद को, कहीं जाके दरख्त से निकली है और तब तक 286 रन बना चुके थे। और फील्डिंग साइड का अपील कर रही है अंपायर लॉस्ट टू द बॉल, क्योंकि लॉस्ट टू द बॉल भी एक लॉ है, फिर 6 रन अवार्ड किए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अंपायर ने कहा यू कैन सी बॉल इज हैंगिंग इन द ट्री सो दे कैन रन देयर, तो उनको 286 रन बनाने दिए गए एंड दैट्स अ गुड शॉट। लेकिन फील्डर हैं तो सही, मौका नहीं चौका, और मौके पे चौका लगे तभी आपको जो है सही तौर पे आप अपना जो हदफ है उसके करीब जा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है नादरा कि लॉस्ट द बॉल लॉ बनाया क्यों गया था, क्योंकि पुराने ज़माने में ग्राउंड्स में दरख्त भी होते थे और एट टाइम्स चूहों वगैरह के बिल भी होते थे और गेंद वाकई गुम हो जाती थी, और जब गुम हो जाती फील्डर हाथ खड़े करता था, बॉल इज़ लॉस्ट, अंपायर कहते 6 रन एंड द गेम इज़ डेड। एग्जैक्टली इसी तरह का एक सीन हमने भी देखा था वीडियो, जिसमें कबूतर या चील जो है वो गेंद को लेकर उड़ गई थी।
यहाँ बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारे ग्राउंड्स पर क्रोज के किस्से हैं, बहुत सारे ग्राउंड पर पिचन्स के किस्से हैं, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ क्रोज हैं। अगर हमारे प्रोड्यूसर बीच में दिखा सकेंगे जूम करके, मिड विकेट पोजीशन पर काफ़ी बड़ी तादाद में क्रोज मौजूद हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गेंद के विकेट कीपर के पास वाइड बॉल का इशारा। आखिरी ओवर चल रहा है और 38 रन दरकार हैं। क्या कहते हैं राना साहब? बस अब कहना तो यही चाहिए कि नहीं बनेंगे। वही बात है कि कहीं किसी दरख्त में बॉल फंस जाए और लॉस्ट बॉल ना हो। ये 38 रन दौड़ के बना। अच्छा, क्योंकि इसके थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं और वाइट पे आपको 2 रन मिल रहे हैं, उसके अलावा भी तो थोड़े से लीनियंसी दिखा रहे हैं बैटर्स। या आउटसाइड द लेग स्टंप, विकेट कीपर के पास। तवक्को है बैट्समैन को, बाकायदा प्लीट कर रहे हैं कि ये वाइड बॉल थी। अंपायर ने कहा नहीं, और अंपायर मुस्कुराकर कह रहे हैं याया को कि याया अपने स्टांस पे रहिए, कुछ भी नहीं हुआ है। और याया को यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने वाइड करार नहीं दी। ये देखिए तमाशाई इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं स्टेडियम में। डिफेंस दबंग का भी आज मुकाबला है, डीएच दबंग का। यूनुस खान की आमद भी मतवक्के है, वाइड बॉल 2 रन का और इजाफा। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी मतवक्के हैं। फ़हद मुस्तफ़ा के बारे में बताया गया, शायद वो भी आज ग्राउंड में हों। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि शाम में जो है वो मेले का समा रहने वाला है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त मुकाबले इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। ओह लुक एट दैट, एंड आई लव आवर प्रोडक्शन टीम कि ये ग्राउंड से बाहर से मोहतरमा मैच देख रही हैं, अपने घर की छत से, और बॉल को वहीं कहीं पहुंचाने की कोशिश है बैट्समैन की। बहुत ज़ोरदार शॉट, बिल्कुल भरपूर 6 लगाया। और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा गुलशन गौहर्स वर्सेस फेडरल बीरिया फाइट्स। और फिर जो थर्ड वन है, ये देखिए बहुत अच्छा हुक किया है, बहुत उम्दगी के साथ। पहले थोड़ा झुक कर फिर अपनी कमर का जोर लगाकर ऊपर उठे। गुड इलास्टिसिटी है इनके बदन में। बहुत अच्छा छक्का, 39 पे नॉट आउट इन 10 गेंदों पर। एक और बहुत ही ज़ोरदार शॉट। याया खान इट्स टू लिटिल टू लेट, मगर इंटरटेन किया है क्राउड को। गुड बैटिंग। 45 रन की इनिंग्स 11 गेंदों पर, 24 रन अभी भी चाहिए सिर्फ एक गेंद पे। बट आई स्पेयर अ थॉट फॉर याया, who batted beautifully. एग्जैक्टली उन्होंने 45 रन्स बना लिए। थोड़ा सा डग आउट का मंजर भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़े से स्माइलिंग फेसेस नज़र आए। और आप देख रहे हैं अपनी गैलरी में बैठी हुई टेरेस के अंदर आंटी तस्बीह भी पढ़ रही हैं। अब किस टीम के लिए सपोर्ट कर रही हैं ये तो नहीं पता, लेकिन यकीनी तौर पर उनको भी अच्छा लग रहा होगा, कुछ अच्छी हैपनिंग्स हो रही। पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप का फाइनल है, शायद उसके लिए भी कोई दुआ कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़ोरदार शॉट, और याया गॉट हिज 15 जस्ट 12 बॉल। बहुत उम्दा बैटिंग। हालांकि लूजिंग कॉज के लिए यह हाफ सेंचुरी रहेगी, मगर स्टिल उनकी तारीफ करना पड़ेगी। 12 गेंदों पर 51 नॉट आउट। वाओ, दैट इज़ वन हेल ऑफ अ नॉक। 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स के बाद, और 17 रन से जौहर जवान्स की फतह। जी हाँ, एक काफ़ी करीब मैच आप कह सकते हैं। 17 रन से जौहर जवान्स ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। अच्छे खेल का मुजाहरा हुआ है, लेकिन जितने लास्ट में जो हिट्स लगी हैं उन्हीं हिट्स की तवक्कुआत थी, तो डेफिनेटली मैच जो है वो चेंज हो सकता था, 5 पलटा जा सकता था। और ये चौथा मैच था KTPL सीज़न 2 का, और ये पहला मुकाबला है जो पहले बैटिंग करने वाली साइड जीती है। यानी टारगेट चेज नहीं हुआ, अदरवाइज जो तीनों मैचेस हुए उनमें टारगेट चेज हुआ। फर्क मेरे ख्याल से डे एंड नाइट का भी कह सकते हैं, लेकिन अभी लेकिन आज नाइट इसमें के तो 2 मैचेस हैं। अभी तो आगे ये स्कोर कार्ड मैं बताता चलूँ, जिसमें 51 रन के साथ याया नुमाया हैं। ऊपर 13 रन खुर्रम के ज़रूर हैं, मगर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। और मिस्टर एक्स्ट्राज हैं सेकंड टॉप स्कोरर विद 15। यहाँ पर शहजाद की बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, 17 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। अब्दुल सलाम, जहांगीर और सैफ जो हैं वो कोई भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। 15 एक्स्ट्रास थे
और 100 रन्स बनाए टोटल। मैच समरी 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 4 विकेट के नुकसान पर 87 जौहर जवान का स्कोर रहा। नॉर्थ नवाब 101 for 6 and 100 for 4 in their second innings. So Johar Jawans won it by 17 runs. इस वक्त हवा चलना शुरू हो गई है और मौसम प्लेजेंट होता जा रहा है और इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आएंगे तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखेंगे। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during PAIME, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of PAIME, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Center. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super.
Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-00800। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 4th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV, इसके साथ साथ जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ये नशरियात जा रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल देखा जाए तो असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में जिस तरीके के सीज़न 2 के मुकाबले चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम जो सीज़न 1 में नहीं थे वो भी आज सीज़न 2 में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं है कि जो बहुत बड़े नाम है वही मैच को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और यही आज देखने को मिला जब जौहर जवान्स की टीम ने फॉर्मिडेबल नॉर्थ नवाब की टीम को 17 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड जौहर जवान्स। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL मिस्टर सादिक मोहम्मद। थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब। उनके साथ आज प्राउड ऑनर, क्योंकि आज इनकी टीम जौहर जवान्स ने एक बहुत तगड़ी टीम को, कि जिसके कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे कि जो पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रखते हैं, उनको शिकस्त दी। मुजम्मिल अथर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ऑनर जौहर जवान्स, जबकि उनके साथ मिस्टर शुएब अहमद, को ऑनर नॉर्थ नवाब। थैंक यू वेरी मच प्रेजेंटेशन पार्टी। कई सारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आज भी देखने को मिली। जैसे मैंने पहले बताया कि जौहर जवान्स की जानिब से खुर्रम, चकवाल, फहद मियाँ, चुन्नू और कई सारे बड़े नाम इस मैच का हिस्सा थे, लेकिन जौहर जवान्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद इस मैच में फ़तह हासिल की। अगर परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो
फहद मियां चुन्नू ने का बैट ज़बरदस्त चला पहली इनिंग में जब उन्होंने 58 रन स्कोर किए 24 बॉल्स पर। इसके साथ साथ वेरी वेल प्लेड दानियाल लेफ्टी की आज बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। निफ सेंचुरी स्कोर की सिर्फ 17 गेंदों पे 55 रन स्कोर किए और दूसरी इनिंग में 16 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए जिसमें 7 छक्के शामिल थे। लेकिन वो बॉलर के जिसने अपनी बॉलिंग से मैच का नक्शा बदल दिया और 4 आउट किए 17 रन देने के बाद मैन ऑफ द मैच शहजाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुजम्मिल अतहर साहब से और शुएब अहमद साहब से कि आप ये मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी पेश करेंगे शहजाद को। वेल बोल्ड शहजाद, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग आज आपने की थी, हालांकि बड़े एक्सपेंसिव रहे थे आप पहली इनिंग में, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम बैक। और ये है क्रिकेट और ये बदर एक्सपो KTPL का फॉर्मेट 2 इनिंग का। कि इधर आइएगा शहजाद, आपसे बात करेंगे। जो मैं बता रहा था कि पहली इनिंग में खास एक्सपेंसिव रहे थे शहजाद आप, और दूसरी इनिंग में आपने आके मैच का नक्शा बदल दिया। ये जो हमारा फॉर्मेट है कैसा लगा आपको 2 इनिंग का? जी शुक्र अल्लाह का। पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है। फिर जो ये फॉर्मेट है ये जो है इसमें जो भी थोड़ी सी अकल के साथ खेलेगा ना तो वो जो है कामयाब होगा, क्योंकि इसमें एक टीम होती है, कुछ लोग होते हैं जो पहले मैच में ये एफर्ट करते हैं दूसरे में नहीं करते। हालांकि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, दूसरी इनिंग में ज़्यादा एफर्ट करो तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। दानियाल लेफ्टी की आज बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। मिमरान ने पहली इनिंग में उनका भरपूर साथ दिया था। आप समझते हैं कि वो जो फर्स्ट इनिंग में 30 रन्स की लीड थी वो बहुत क्रूशल साबित हुई? माशाल्लाह दानियाल लेफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत ज़बरदस्त खेला है। उसकी जो पहले मैच में जो इनिंग थी फिर दूसरे मैच में भी वो बहुत अच्छा खेला है, तो इस वजह से हम लीड जो है ना आसानी से लीड ले सके हैं। हमने स्कोर भी 130 कर दिया जो कि बहुत अच्छा स्कोर है मेरा ख्याल है। अभी तक तो फ़िलहाल तो हाईएस्ट स्कोर ही है वो। शहजाद, पूरे पाकिस्तान में जाके आप टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बदर एक्सपो KTPL के जिस माहौल में आप खेल रहे हैं ज़रा कुछ बताएं। हाँ माशाल्लाह, ये जो बदर एक्सपो KTPL है ये तो फिर हमको इंटरनेशनल माहौल मिल जाता है। और पहले तो हम वो लोकल खेलते हैं ना, लेकिन इधर वो इंटरनेशनल माहौल होता है, दूसरी लोकल क्रिकेट नहीं होती। यहाँ तो पूरा एक नज़्म ज़ब्त होता है, सारा कुछ पाकिस्तानी प्लेयर के साथ फिर हम ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, सारा कुछ उससे बहुत कुछ हासिल होता है मिलने। एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलें, आपके घर वालों को भी बहुत मुबारक शहजाद, वेरी वेल बोल्ड। थैंक यू वेरी मच शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी, सादिक मोहम्मद साद, मुजम्मिल अतहर साहब एंड शुएब अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज ट्रिपल हेडर है, पहला मैच आज मुकम्मल हो गया। आपसे थोड़ी देर के बाद दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है, जहां FB फाइटर्स और गुलशन गौहर्स की मजबूत टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसका टॉस तैयार है, पिच पर रेडी है। के आसिफ, इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen, and this is the second contest of this evening between Gulshan Gohars versus FB Fighters. I'm down here with 2 captains and we're ready for the toss. And Haris Ali, captain of FB Fighters, with him Bahadur Lefty, the captain of Gulshan Gohars, and the match referee Nomanullah, former international cricketer. Bahadur Lefty will flick the coin. Head is the call. Head. Head. हारिस, अब टॉस जीत गए, क्या करेंगे? मैं पहली बॉलिंग करूँगा इंशाल्लाह। हारिस, आपका पहला मैच है सेकंड एडिशन में, आपने पहले भी इसमें पार्टिसिपेशन की, सो आज क्या प्लानिंग होगी, कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? कोशिश करेंगे कम से कम में इनको पकड़ें, क्योंकि वो टीम भी अच्छी है और हमारा टूर्नामेंट का पहला मैच है, और अगर पहला मैच विन करते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तैमूर मिर्ज़ा भी दूसरी टीम में है, बहादुर लेफ्टी उनके कैप्टन, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, कल ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली, उनके लिए कोई प्लान आउट किया है? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और कोशिश करेंगे कि जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं, जिस तरह का इनका स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलें। चलिए, गुड लक। थैंक यू। बहादुर, कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, बहादुरी से बैटिंग की, और तैमूर मिर्ज़ा भी बड़े ज़बरदस्त टच में नज़र आए, आज क्या प्लान्स हैं? हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त तैमूर भाई ने और मैंने अच्छा साथ दिया। आज प्लान यही है, इंशाल्लाह 100+ करेंगे, और जिस तरीके से कंडीशन है तो 100+ करेंगे इंशाल्लाह। अब इंजॉय कर रहे हैं बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन, ज़बरदस्त तरीके से कवरेज हो रही है, पूरी दुनिया में आपके मैचेस देखे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है एनवायरनमेंट और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। चलिए, गुड लक। थैंक यू। Well, so news from the center that the captain of FB Fighters, Haris Ali, he has won the toss and he has decided to bowl first. This is the time for the short break. Stay tuned, Geo Super.